Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm Deeksha Bhandari. And I am Adrija Shukla. We both welcome you all to the film screening session on Day 2 at Cinephile, the annual film festival of Vivekananda Institute of Professional Study. Today's session has films from for us. Not just that, along with this, there will be a small interaction session with directors of the respective films. So, ladies and gentlemen, let's kickstart the event with the first film of the day. Our first film is Leukemia, Not Just a Disease, a documentary by Mr. Antrik Anvesan. Leukemia, or the blood cancer, is one of the biggest causes of death among children today. Just imagine a situation in which somebody in your family is the victim. How would you react? This is probably a very general statement, but for them who have known the people as victims of this deadly disease, this shivers down their spines. This film tells the story of Akanksha, a 14-year-old girl who had leukemia and who returned victorious from the face of death simply by owing to her optimism and determination. Ladies and gentlemen, let's become a witness to the courage of this brave heart through the eyes of Andrika Vesi. Please put your phones on silent mode. Do you know what is leukemia? Nine. Nine. Yes. Yes, my friends are looking. Definitely, when I say blood cancer, Yes. I know that cancer the blood. also blood cancer. That is blood cancer. There are thousands of diseases plaguing the world today. A major population is wiped out every second due to diseases beyond one's control. One of the deadliest and least predictable of all diseases is leukemia, cancer of the blood. How would you react if you get to know somebody close to you suffers from leukemia? Dr. Janika. Obviously, I'd obviously be very worried first thing. I'm very much shocked होगा. It will be some, and I don't know how will I react. But okay, first of all, very upset and sad. I will have several people in the family question. For somebody very close to one of my cousin had this, that was devastating. It's a very dangerous disease. Well, it's definitely not something that digest very easily. Some people I don't know if there is no cure for it. सबके साथ ये भी मतलब आता है कि शायद ठीक नहीं होगा. When I set out to talk to people regarding the disease, I was surprised by the response received. Although I chose the people very carefully, people who live around me but who I don't know anything about. Somehow, every second person I met had known someone close who had suffered from some form of cancer. The victims aged anywhere between a 70 mother-in-law to a 3-year-old grandson. They had suffered enormously. They had tolerated the pain. They had sustained for some time, and in most cases, they had perished. They had left behind a caring husband, a loving wife, a young child, an ailing parent, a broken sibling, a childhood friend, and a lot of known persons suffered their absence. But are they really to be blamed for having leukemia? What, according to you, is the best cure for leukemia? the first and foremost is hope, and then the medical treatment as it should go.
you should detect it early and then go to the doctor. I think it's not because of the body, it's a disease of the mind. और उसके अंदर रोगी के अंदर भी ये चीज ताकत होनी चाहिए कि वो 30% कोई भी बीमारी थे इंसान उसके काम खा सकता ताकि अब बीमारी इंसान से जैसे चिंता करने की शोध चिंता है लोगों वाले को कॉमन that's what it is because not will say oh my god I'm not going to make it but oh my god how do I conquer this and if I can how do I survive प्यार से ठीक करना चाहिए ऐसा कुछ भगवान ने चाहिए कि वो कैसा लगाना पड़ेगा ये पड़ेगा क्यों है So I feel that if the problems in the mind can be solved, definitely the disease must be. fight as much as you can and get through it the best way you can fight it बाकी सब लोग किस्मत में रहते हैं Every person I talk to seems to have a similar line of thought when I ask this question. Sympathizing with the victim and giving him or her the hope to live, that is the best that can be done, he said. Probably it was the loss that they faced which propelled them to add that there is no cure for leukemia and one can only delay the onset of death on the victim. It could be you sitting and watching the film, or one of your close ones in the family, or friends, or I, who might discover leukemia in our body at the next doctor's visit and be left devastated. Is this how hopeless the disease is? Is this how helpless we humans are? Is there actually no cure for leukemia? My questions were answered by the most unexpected person. An 18-year-old Delhi University English honors postgraduate student. I read a blog done for Haters in Design, where she wrote extensively about her friends, family, near and dear ones, and most importantly, the rest of leukemia. As I went on to learn the story, I knew there and then this is what my friend was going to be about. I talked to her and her parents to help me with this story. Convincing them wasn't difficult. Getting the minute details of the entire encounter out of them was easy. It was hard for me to stick to my objective of the film. The film had slowly molded itself away from leukemia because the girl showed me the bigger aspects of the disease. She taught me that, as perceived by many, leukemia is not just a disease. This is the story of Akash. Patient number 24256B, Child Cancer Ward, District Medical College, Delhi. सन 2007 दिसंबर 4 तारीख एक नया जगह में जाके ज्वाइन किया था। ज्वाइन करने के तुरंत बाद मुझे पता चला कि मेरे बेटी को हाथ में कुछ दर्द हो रहा है। उस समय मैं उसको उतना सीरियसली लिया नहीं था, मुझे कुछ छोटा बड़ा दर्द होगा ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर को दिखाया गया, डॉक्टर ने कुछ ऐसे ही इतना कोई सीरियसली लिया नहीं, सोचा भी नहीं उसके बारे में और उसको कुछ पिल्स दे दिए, तो पिल्स खा ली और दर्द कम भी हो गया। फिर कुछ दिन बाद फिर दर्द हुआ उसको, फिर ऐसे कुछ पिल खा ली और तब ठीक हो गया। लेकिन जैसे टाइम बीतता गया उसका दर्द जो है ज्यादा फ्रिक्वेंटली होने लगा। उसके बाद फिर हम ऑर्थोपेडिशियन के पास ले गए। ऑर्थोपेडिशियन ने वो सब फिर दूसरा मेडिसिन देने लगे, उसमें 4-5 महीने चला गया, उसमें भी ठीक नहीं हुआ। उस समय मैं तो अपने बेटे को डांट रही थी कि उसका हाथ मोड़ दिया, कुछ कर दिया इसी जिसकी वजह से हाथ दर्द हम लोग को क्योंकि रीजन पता नहीं चल रहा था किस लिए हाथ दर्द हो रहा है, सब डॉक्टर को दिखा चुके थे। लेकिन इसका एक हफ्ते बाद में उसको पेट में दर्द शुरू हुआ और जो कुछ भी खाना खाते थे उसको उल्टी कर देते थे। तो उसमें थोड़ा सा डॉक्टर से कंसर्न हुआ, हम लोगों को भी थोड़ा सा लगा कि शायद ये कुछ गहरा प्रॉब्लम है, ये सुपरफिशियल नहीं है। वो फिर अल्ट्रासाउंड के लिए भेज दिए। अल्ट्रासाउंड से पता चला कि किडनी बड़ा हुआ है, एक लेफ्ट किडनी बड़ा हुआ है। एक हफ्ते के लिए मेडिसिन खिलाया, उसको खिलाने के बाद जब नेक्स्ट जो एक हफ्ते बाद फिर से अल्ट्रासाउंड किया गया तो पता चला कि किडनी और ज्यादा बढ़ गई है और दोनों किडनी बढ़ गए थे। तो वो जो नेफ्रोलॉजिस्ट थे वो भी काफी परेशान हुए थे, उनको भी पता नहीं चल रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, किडनी क्यों बढ़ रहा है।
इसका टेस्ट करना पड़ेगा, किडनी का बायोप्सी करना पड़ेगा, जो हमारा ओडिशा में नहीं होता। तो आपको उसको बाहर ले जाना पड़ेगा, चेन्नई बेलोर वगैरह कहीं पर जाके वो करने के बाद और पता चलेगा एक्चुअली क्या हुआ, तो उसके बाद आप वैक्सीन प्रोसेस कर सकते हैं। इस समय तो एक्चुअली क्या हुआ था, उसका दर्द जो है जो दोनों हाथ से दोनों पैर में भी होना शुरू हो गया। तो उसका एंटायर बॉडी जो है पूरा काफी दर्द महसूस कर रही थी और ऑलमोस्ट रो रही थी। कितना देर सो जाते थे ठीक है, सो जाते थे, जब भी वो नींद खुलता था तो दर्द होता था। बेंगलोर जाके जिस दिन वो एडमिट हुई उसी दिन वो लोग फिर नेक्स्ट डे उसका बोन मैरो करा दिए। बोन मैरो से पता चला उसको कि कैंसर है। मुझे यही शक लगा, मुझे ये पता नहीं था कि मैं क्या करूं। एक्चुअली मेरा थिंकिंग प्रोसेस पर बंद हो गया, तो कुछ सोच भी नहीं पा रहा क्या करूं, किससे बोलूं, क्या बात करूं, क्या नहीं करूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। जब उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, उसका हाथ दर्द ठीक होने लगा, पेन कम हो गया, तो मुझे लगा कि हाँ उसका हाथ दर्द ठीक हुआ, तो आजकल तो सब चीज का इलाज हो जाता है, उसका भी ठीक हो जाएगा। तो मेरा मेन एम था कि उसको खुश रखना है। फ्रॉम द बिगनिंग मुझे नहीं पता था कि आई वाज हैविंग ल्यूकेमिया। एक दिन शाम को मैं ऐसे बेड पे लेटी हुई थी, पापा वाज सिटिंग जस्ट बिसाइड मी एंड उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारे ब्लड में इन्फेक्शन है। एंड फिर आई डोंट नो हाउ आई रिएक्टेड। फिर उन्होंने मुझे बताया कि बीमारी का नाम प्री एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया है। एंड आई वाज लाइक, नाम थोड़ा छोटा नहीं हो सकता? That is the innocence, a child's innocence. For the parents supporting each other at a time when their only daughter is fighting with cancer is the issue. But for the young girl, probably something as small as losing her hair is the bigger issue that she was dealing with. You know, मेरे को अपनी लुक्स की कभी चिंता नहीं होती थी, but I always loved my hair and they're pretty beautiful. मैं बहुत सही थे। हाँ, everyone used to adore my hair. Even when I was in CMC, जब मैं गई, वहाँ की sisters, doctors, everyone adored my hair. थोड़े लंबे बाल करने से, and बहुत अच्छा बोलते थे मेरे बालों को। Like mama used to comb my hair. She used to see that my hair was falling, but उन्होंने मुझे कभी बताया नहीं। Then कभी-कभी मैं बैठ के नोटिस कर देती थी, but hair loss was like common ना, लड़के को होता ही रहता है टाइम पे। और मैंने उतने ज्यादा बाल देखे भी नहीं थे करते हुए। So one day Dr. Lemi came and told me कि would you like it to see your hair wherever you eat, wherever you sleep, wherever you go? तुम्हें हर जगह फैला हुआ अच्छा लगेगा? I obviously said no. And then she said अभी हम केमोथेरेपी कर रहे हैं, तुम्हारे बाल बहुत झड़ने वाले हैं, so it's better if you shave off your hair. And I was like, I couldn't say anything क्योंकि शायद उससे पहले मामा पापा ने ये टॉपिक उठाया था। फिर डॉक्टर लेनी ने उस दिन वैसा बोला एंड मेरे को पता चला है ल्यूकेमिया, तो एक बार से मुझे हुआ था। एंड उन्होंने बोला कि यार बाल काटने, आई वाज लाइक Kansha was shifted to the ICU when her first round of chemotherapy failed completely. She was almost dead. आईसीयू में जब एडमिट किया तो उस समय सब डॉक्टर्स तो जो है बहुत सीरियस थे। उसका कंडीशन एक्चुअली बहुत ही खराब था। उसका ब्लड प्रेशर काफी डाउन हो गया था, 23/9। तो इतना कम ब्लड प्रेशर में किसी का मतलब सर्वाइव करना ही तो प्रॉब्लम होता है। तो जो आईसीयू में कुछ देर बाद जब मैं अंदर गया उसको देखने के लिए, तो उसमें डॉक्टर ने मेरे को बताया था कि इसका चांसेस बहुत ही कम है, फिर भी हम कोशिश करेंगे अपने जितना हमसे हो सके ह्यूमनली जितना पॉसिबल है वो हम करेंगे। उन्होंने उनको कहा था कि उसका 50-85 चांसेस है, 50% चांसेस है सर्वाइवल का। But we let us hope for the best. Just pray God. Let's see who's through. तो उसको सुन के एक्चुअली मैं बहुत ही परेशान हो गया था। एक्चुअली मैं ऑलमोस्ट डेड। पहली बार देखी कि अपनी बेटी को लगा है वेंटिलेटर, तब डर लगा था। मैं पूछी थी ये क्या है, कैसे क्या है। तो कुछ डॉक्टर लोग कुछ ऐसा बोल नहीं रहे थे, वो बस बोल रहे थे कि हम अपना काम कर रहे हैं, आपको भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, ऐसे ही बोल रहे थे। तब तो डर लग रहा था कि कैसा होगा क्या होगा। और 3 दिन के बाद जब वेंटिलेटर खुला उसका, तब मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि उसका मुंह पूरा खुला ऐसा टेढ़ा हो गया था।
तब मुझे बहुत डर लगा था कि मेरी बेटी का मुंह ऐसे टेढ़ा ही होकर रह जाएगा क्या। मुझे ऐसा लग रहा था कि मशीन के अंदर एक तो बड़ा हुआ है, बहुत सारे मैसेज चारों तरफ लगा हुआ था, तो हर जगह कुछ ना कुछ रीडिंग दिखा रहा था, बहुत सारा सालाइन 4-5 तो लगा हुआ था एक साथ में, तो उसमें मैसेज वगैरह दे रहे थे। तो उसको देख के वो जो है वो काफी जैसा अनकॉन्शियस स्टेट में थी, सेमी कॉन्शियस स्टेट में थी एक्चुअली, मतलब टोटली कोमा में नहीं गई थी। तो डॉक्टर्स ने यही बताया कि सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट इस लड़की में ये है कि शी इज नॉट अनकॉन्शियस, शी इज स्टिल कॉन्शियस। इतने सारे रिएक्ट के बाद में कॉन्शियस है, इसलिए हम लोगों को लगता है कि वी आर होपफुल कि वो ठीक हो जाएगी, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। Learning that she will be having a first operation was a moment of joy for Akansha. Over the months she spent at the lot, under the chemotherapy regime, she lost a lot of her freedom. लेकिन के टाइम में भी काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, मेनली खाने पीने का एंड क्राउडेड प्लेसेस में जाने का। मैं बाहर का कुछ भी खा पी नहीं सकती थी क्योंकि पैक्ड चीजें इट्स फाइन, बट ऑल दो पिज्जा बर्गर्स वो सब अलाउड नहीं थे। मोहर लगाने के लिए बोले तो एक छोटा सा ऑपरेशन करके लगाना है, तो बहुत खुश थी। हम लोग को बहुत डर लग रहा था कि इतने छोटे बच्चे को ले जा रहे हैं ऑपरेशन के लिए, कैसा होगा क्या होगा कितना पैसा होता है, लेकिन वो बहुत खुश थी कि हाँ मेरा फर्स्ट ऑपरेशन हो रहा है। अगेन स्माइलिंग हेल्प्स अ लॉट लाइक ऑब्वियसली मेरे चारों तरफ वहाँ पे जो भी थे सब हर टाइम मतलब ऑब्वियसली लोग खुश होना चाहते थे, लेकिन in a way they were acting ना, because उनके दिल में कहीं ना कहीं था कि I am going through a serious problem, तो मुझे वो पता चल जाता था। and to keep them normal I had to be normal। अगर भी मेरे अंदर कुछ चला I don't remember मेरे अंदर क्या चल रहा था, क्योंकि मैं हमेशा इतनी cheerful and jolly रहती थी कि मतलब smile actually helps you, smiling and laughing, मैं all time स्माइल एंड लाफ करते रहते थे। जब तुम दूसरे को बताते हो तुम्हें खुद को अच्छा लगता है, तो जो भी तुम्हारे अंदर कोई नेगेटिविटी या फिर कोई भी लाइक इविल चीज वो भाग जाते हैं। जस्ट हैव टू गिव अ बिग स्माइल, स्माइल। I met a psychology teacher at school and talked to her about Akansha's entire body. I wanted to know what is the usual psyche of people who suffer from such diseases and what is the best way of treatment. Today is actually an era of positive psychology, and I'm seeing a live examples coming out here, where people who have been suffering from a lot of serious illnesses has come out, has proved it fatal. Diseases can be conquered and can be actually overcome with a lot of positivity and a lot of faith in themselves. Anyone who's suffering from any kind of an illness, it all depends on how that particular person is taking that disease, how it's being circulated and how it's being given to that person, how he or she is ready to take that particular disease. मेरे को भी कभी डिप्रेशन आता था, मैं कितना कहाँ का मतलब ये होगा पता नहीं, इसके क्या होगा आगे चल के क्या नहीं होगा, ऐसा सोचते थे। हम लोग कभी डिप्रेशन हो जाता था तो एनकरेज करते थे, इसमें होगा फर्क है, ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। एक बात तो ये भी बोल रही थी कि देखो ये चीज जो हमारे फैमिली में आने का था ये आया, और बैक इसलिए आया कि मैं सबसे छोटी बैक ऊपर आता तो फिर बैक का पॉइंट बंद हो जाता, और उसका एग्जाम था क्लास 10 का वो बंद हो जाता, तो पापा तो याद कर रहे हैं हमारे लिए, अगर उनका होता तो फिर हम लोग को खाने को नहीं मिलता, मम्मी तो सबके लिए खाना बनाती है, उसको तो फिर हम लोग कैसे खाना रखने का, तो वो आई एम द राइट पर्सन, इसलिए ये हमारे घर में आ रहा था, तो इसलिए जगह में है। तो कभी ऐसा लगता था तो हमको कभी लगता था कि इसे भगवान मुझे इससे बची हुई है कि अपने आप को कुछ नहीं समझता था
ये किसी बेटी मेरे घर में पैदा हुई है। Pancreatitis is a major side effect of chemo and damages the pancreas bones. The shooting the stem largely got affected by pancreatitis also. नॉर्मल डीएनएस का फिर उससे क्या होता है? तो उससे क्या होता है? ग्लूकोज भी होता है, यहाँ से रहने होता है। मेरे को पैंक्रेटाइटिस हुआ है और ये पता नहीं क्या लगा हुआ है, जो पेन किलर है। हेलो, अच्छा खाना खा के जाना। हाँ वैसे मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, पॉइंट भी नोटेड। अब पानी पी के मेरे पेट में दर्द होने लगा, इसलिए पानी भी नहीं पिया मैंने। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। सुबह से मुंह फुला के बैठे थे, अब कितने अच्छे शॉट्स आ रहे हैं मेरे, इसीलिए हॉस्पिटल। यार एक्चुअली देखो, इट्स नॉट अबाउट खुश होना पैंक्रेटाइटिस पे, इट्स कि तुम दुखी होके करोगे क्या? वो होना था हो गया, अब दुखी होके क्या फायदा? उससे बेटर है कि जब पेन नहीं हो रहा है तो नॉर्मल रुको। पेन होते टाइम यू कांट लाफ ना, क्योंकि बहुत सीवियर होता है। लेकिन जब पेन नहीं हो रहा है, आज तक बिग डील क्यों अपसेट हो रहा है? अकेला करके रहो, नहीं मेरे साथ पूरा पैंक्रेटाइटिस दोबारा आ गया, इट्स एक्चुअली नॉट इवन दोबारा। अब तो कुछ नया भी नहीं लगता है, तो इसमें मैं अपसेट किस बात के लिए हूँ? If you are in serious about people know that तुम्हारे साथ कुछ बहुत सीरियस हो रहा है, तो मतलब वहाँ पे स्ट्रेंजर्स एक दूसरे को देख के they do prayers for you, like तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचता है वहाँ पे। लाइक वहाँ जाके ना मुझे बहुत पॉजिटिव सी फीलिंग आती है। अभी मुझे 6 months 1 year में जाना होता है फॉर चेकअप, और मैं वहाँ जाके बहुत खुशी रहती हूँ, पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। इवन दो लाइक ऑब्वियसली कोई वहाँ जाना नहीं चाहता फॉर मेडिकल रीजन, लाइक तुम्हें कुछ सीरियस या कुछ बुरा ना तभी तुम वहाँ जा रहे हो। फॉर मी इट्स अ प्लेस टू बी हैप्पी, क्योंकि आपको कहीं ना कोई इविल चीज नजर नहीं आए। एक तो ये होता है लाइफ इज एग्जाम, लाइक ऑब्वियसली आई डिडंट प्लान फॉर ल्यूकेमिया एंड ऑल, बट अचानक से हो गया। You just have to pass, तो पास करना ही है। If you lose you are dead, तो obviously you just need to have that strength। अगर तुम्हारे पास कोई भी बड़ी सी प्रॉब्लम आए, just tell कि yes okay प्रॉब्लम आई है, I'll face it, I'll be brave, I'll do it, bring it on। तो जब वैसे हम बोल दें ना लाइफ से, तो पक्का ही है कि लाइफ हारेगी, हम जीतेंगे। तो दैट वाज द पॉजिटिव थिंग। अभी कभी भी मेरे को कुछ नहीं होता तो ठीक है। I mean, it's not that big deal that I'll start crying and all. But okay, there's a problem, I'll face it. I won't turn around, I won't turn my back. I'll face it. पहले मुझे ऐसा लगता था कि अजय हर चीज जो है कुछ फ्यूचर के लिए संभाल कर रखे, फ्यूचर में करेंगे। लेकिन उसके साथ ये डिजीज होना, जिस हिसाब से उस डिजीज को फेस किया, उससे मेरे को लगा कि उससे महसूस हुआ कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल होगा नहीं होगा कौन जानता है। इसलिए आज का दिन जो है उसको अच्छे से जीना चाहिए। ये चीज थियोरेटिकली तो मैं पहले भी जानता था, लेकिन पहली बार वहां पे महसूस किया उसको स्वीकार में रहते हुए कि हमको प्रेजेंट में जीना चाहिए, आज के दिन को एंजॉय करना चाहिए, कल क्या हो किस स्टोरी। Probably that is how unpredictable life is. We don't know what might occur the next moment, but we are worried about what would happen 10 minutes down the line. Probably that is the mistake we commit every day. In the quest for a happy life, forget to enjoy the small reasons of joy. With every job done, with every smile passed, with old friends reunion, with family get-togethers. We forget to live each moment of each day. Leukemia is not just a disease, it is a life experience. Getting to learn all this from a young girl, a tender 14-year-old leukemia patient, giving the sole reason of support for her entire family, is an inspiration in itself.
one might understand the relevance of becoming a doctor at this year conscious state. But my question, the relevance of me using such a complex personal account to understand a simple life message, optimism, I would answer that simply. I wouldn't have ever thought of this, but I can't not be my little sister. We have amongst us Mr. Andrik Andresen, the director of the film, and Miss Akanksha, the protagonist of the film. So, can we have both of you on stage, please? We would love to if you share your experience with us, and Nancy. Thank you so much, everyone. This is the third film festival screening of the film, and the first one where I have been present during the screening. So yeah, I'm a lot nervous right now. So I don't know what to say. Maybe we can have a Q&A session. If you have any questions regarding the film, anything. Yeah. Yeah. This is such an inspiration. This is such an inspiration. Knowing the relationship of it, so how it was to you? This process, you have been seeing it all over. Okay. Yeah. Actually, it was a very subjective thing for me. Uh, I did not know if I should mention during the film that the protagonist is my sister. It was a very subjective and something that I decided at the very last minute. When I was scripting the narration part, I did not know should I include it or not. Maybe people will say ये इसकी बहन की कहानी इसने बना दिया, घर का मामला है. So I was very nervous about that. I did not know what to do. But frankly speaking, when the entire incident happened, 2008 to 2011. 2008, my 10th board results were to be out, and I was with my grandparents, and my parents had taken her to Vellore. We did not know what was happening yet. And the very day when the 10th board results came out, I talked in my school, and the very same day my parents get to know that their younger daughter has cancer. So, and I was not told about it. I was not told about it till a very long time. And the minute details, the daily accounts of what was actually happening there, I never knew that before this film. I never bothered to ask them because I did not want to know. I was like, she's fine, okay, we can continue now. I was back to normal. The only thing I was wishing for is my parents to come back, my sister to come back from the hospital. That was more important for me. Rather than knowing what was exactly happening, I knew that it was something very grave, something very serious, something life threatening. And yeah, so that's it. When I made the film, with my father, I had a very brief discussion with my parents before I shot the film, and they were laughing.
क्या हमारे ऊपर फिल्म बनाएगा, that types. And this was my college final project, BGM's final project, and when we were supposed to decide क्या करना है, I knew I want to make a film, and the only topic I had in mind was this. I did not want to go for anything else. This was the only thing. And when I was discussing with my parents, I got to know very minute things. Like she was in the ICU. I knew she was in the ICU, but I never knew that she was in a 1585 survival. She had a 15% chance of survival. Those minute, and I think those are the things that actually matter in the film. Those are the things which I got to know only while I was recording. I never knew about it. And I had about 5 to 6 hours of footage. There was continuous camera recording going on. I had just left the camera and I was talking to my parents. It opened so many things. I did not know मेरे को क्या include करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. Shooting the film took me 3 days, and editing took me 3 months. I did not know what to cut, what to do. I had no clue. So going by the response, I assume it's a. First of all, a great film. And a very important question. How do you keep yourself so positive? I have been wondering that. I actually look like whenever I'm upset, I actually open my laptop and watch this movie. Okay, yes, I'm the positive girl. I have to be positive because there are moments when I'm like, I don't want to be positive. ठीक है, because every time I have been like since class 9, since the time I suffered from leukemia, everything was अच्छा ठीक है कोई बात नहीं ये हो गया चलो ठीक हो जाएगा. And you had this too much leukemia. No, I had no idea. Like people are saying, okay, you have leukemia. Okay, ठीक है. The thing that bothered me was because we went to Vellore during our summer vacation. So I was like, ठीक है, जून में खत्म हो रहा है, मुझे स्कूल जाना है. I love my school. I love my friends. There was no life without friends. We had ninth, 8th. So I was like, ठीक है यार जो करना है 2 महीने में कर लो, तीसरे महीने मुझे यहाँ से निकाल दो. मुझे नहीं पता तुम्हें जो करना है ठीक है. आई एम इन पेन, मैं चिल्ला रही हूँ. इट्स फाइन, कूल, आई डोंट केयर. बट या बाय द एंड ऑफ इट आई वांट टू वर्क. एंड देन जुलाई हो जाता है एंड वी हैव देन नो व्हेन यू आर गोइंग होम एंड माय फ्रेंड्स आर कॉलिंग मी व्हाट्स रॉन्ग विद यू. दे डोंट नो, आई डोंट नो. एंड माय पेरेंट्स से दैट ब्लड में इन्फेक्शन है. आई डिड नॉट नो टिल लाइक 6 months और सो कि मेरे को कैंसर है. आई डिड नॉट नो ल्यूकीमिया इज ब्लड कैंसर. तो आई वाज स्टिल अबाउट इट. दैट टू मेरे ग्रैंड पेरेंट्स लाइक माय दादाजी केम टू विजिट मी एंड ही ऑफर्ड मी टू रीड द बुक कि किसी भी ब्लड कैंसर हुआ था तो यू रीड इट, इट वुड बी इंस्पिरेशनल फॉर यू. एंड आई गो टू माय मॉम इन द किचन, मॉम मुझे ब्लड कैंसर है. एंड माय मॉम वाज लाइक हम तुझे बताने वाले थे घर जाने से पहले कि तुझे पता होना चाहिए, वहां पे शॉक ना लग जाए. आई एम लाइक ओके. एंड मम्मी वैसे देख रही है. मैंने बोला कोई नहीं, सही तो हो रही हूँ, हो ही जाऊंगी सही, और क्या करना है. हेलो. इसकी बीमारी के जाने से पहले लड़ाइयाँ होती होंगी भाई बहन? इसके बाद भी होती हैं. The only period जब मैं like I was 50 kg, so I lost, I think I was 32 when the chemotherapy was going on, and he visited me for a couple of days and he did not even come near me. मैं तेरे को छूंगा नहीं. So that was the only phase when we did not fight. We fight अभी. That was actually a time when, had I seen her on the road somewhere, I would never have recognized that she's my sister. It was such a bad condition. Hi, Gansha. I'm Sahil. I want to tell you that you are the first girl ever in my life. And you are so inspirational to all of us. And I have one request from you. Yeah. Can you just sing that song? No, not Okay. That song was recorded when actually she thought that I was adjusting the camera. Yeah. So she had no clue that it had been shot, and then I included it in the final cut. I actually love that song and तभी आया था birthday. So I was singing the song. I did not even know कि ये shoot करा. I actually shouted at him for keeping it in the. So please don't make me sing.
Like I'm in theater and my theater people say, Akansha, please shut up, don't say. So you don't want your ears like. Let's give it a try. Okay. क्यों ना हम तुम चले तेरे मेरे से रास्ते पे नंगे पाँव रे चल रे भटकने हवा रे Thank you. Actually, they're running behind schedule, so I think we can talk. Yeah. Thank you so much for the response. Thank you, Amrit. Thank you, Akansha. Well, certainly this lady is no less than an inspiration for her strength and the spirit that she has shown. Okay, then let's move on to our second film of the day, Between Survival and Salvation. It's a documentary film by Himanshu Vaishya. Between Survival and Salvation depicts the plight of widows living in Vrindavan. This film revolves around the miserable condition of widows and how they suffer due to segregation and traditional value system prevalent in Indian society. So ladies and gentlemen, here we present to you Between Survival and Salvation. Vrindavan is considered to be a holy place. Ashrams and temples in this holy city are centers of learning Vaishnavism. Millions of devotees visit holy places associated with Lord Krishna and Radha every year and participate in a number of festivals that relate to the scenes from Krishna's life on earth. Mirabai came to Vrindavan after the death of her husband due to ill treatment by her in-laws. This tradition is still followed by most widows even today. Although Mirabai's father-in-law took her back to Chittor, but by that time she had become a role model for most widows. Her message: Krishna's bhakti is the best way to live, as it helps human beings overcome their desires and attain moksha, and it is religiously followed by widows. The plight of widows represents the worst form of discrimination against women in India. Yet, it is deeply bound in ancient and unshakable tradition. Superstitious families say widows are bad luck and blame them for the death of their husbands. Furthermore, most of the Orthodox Hindu families living in remote areas still frown on the right to remarriage of widows. I am in Vrindavan for the last 18 to 19 years. I came from Calcutta because I lost my husband. I had nothing to bank upon except Lord Krishna. I get one meal during the daytime from the temple. I have to beg on the streets of Vrindavan to sustain myself.
The sorry state of affairs for these widows is disheartening. If we deprive these widows of faith and trust, their life is reduced to a hope for death, because only death brings salvation. Many pilgrims from the world visit Vrindavan to pay their reverence in various temples on the tourist map of the city related to Lord Krishna and Radha. But some of them get a huge shock when they come to learn about the plight of widows who are living in Vrindavan after being ostracized by their families and the society in which they grew up, married, and raised their children. Many of the pilgrims fail to understand why the segregation is still going on against the widows in the states of West Bengal, Orissa, Bihar, and Jharkhand. A woman who loses her husband has to lead a life as a social outcast, regardless of her age. According to some Hindu traditions, upper caste widows should not remarry, so many of those abandoned by their families on the death of their husbands make their way to Vrindavan. Vrindavan is also known as the city of widows due to the large number of widows who have moved into the town and surrounding areas after losing their husbands. Hindu widows have long believed that death in Vrindavan will free them from the cycle of life and death. The widows also believe that the death in this holy city will save them from being condemned to such a life again. This religious belief gives them courage to accept all kinds of atrocities. There are an estimated 50,000 widows living on the streets, many of whom have spent over 30 years in Vrindavan. A large number of widows were shunned by their conservative and orthodox families in West Bengal. They are persuaded or even forced by the family members to live a sacred widowed life in Vrindavan after the death of their husband. Some widows are forced to leave their home and native place by the family members just to avoid maintenance in old age and bearing the burden of a non-productive family member. Many others leave their homes due to physical and mental torture inflicted upon them by their family and society. In parts of West Bengal, women are left to fend for themselves and thrown out of their house as soon as they become widows. Once they are thrown out of their house, they have no option but to take shelter in the ashrams of Vrindavan because they receive no financial assistance from their kith and kin. Most of the widows have to work as domestic help to supplement meager food. Others beg on the streets and bathing ghats of the river Yamuna, where devotees pay reverence to the sun god. Some widows stay in dharamshalas, some in rented homes, a few on the streets, while others stay in homes run by NGOs and the government. The widows staying in dharamshalas or aided accommodations are completely at the mercy of management. Once they start staying in these organizations, they are closely watched and not allowed to interact with visitors most of the time. Some of them are even thrown out of their accommodation if they beg or complain against management. Despite these restrictions, some of the widows were contacted and their stories ascertained. Most of them were encouraged soon after they became widows to proceed and settle down in Vrindavan, and they were promised regular financial remittance so that their requirements could be taken care of by their families. Invariably, these remittances dry up and totally stop after some time, ranging from 6 months to a year. As for their family in Calcutta and small towns and villages from where the widows migrate, they have all but ceased to exist for their relatives. It is a sad state of social responsibility and indeed tantamount to culpable criminal negligence. Unfortunately, social welfare organizations and even the state machinery fail to take note of the situation and initiate appropriate remedial measures. The condition of these widows becomes appalling. In the wee hours of the morning, these widows can be found on side streets, running towards ashrams for a cup of tea or a few eats, offered to the widows who make it in time. Rest of them argue, fight, and squabble outside the gate for entry or for the leftovers, if any. These widows' survival techniques are commendable, however.
As soon as they are over with the early morning lucky breakfast, they rush towards temples and the ghats of river Yamuna to get a few alms or few eatables. As the sun starts fanning its rays on the faces of these widows, they throng towards Bhajan ashram to sing hymns in the praise of Lord Krishna and Radha. They have to reach Bhajan ashram in time, or they will be denied entry. I am in Vrindavan for the last 25 years. I get 1 week from Bhajan Ashram and have to work or beg for my sustenance. When I came to Vrindavan in 1994, I was paying 50 rupees as rent, which has shot up to 1000 rupees now. I did not have money to pay for the rent, so I was thrown out of my room. I have come to Vrindavan from Howrah district in West Bengal. After the death of my husband, I had differences with my in-laws. To avoid ill treatment, I came to take refuge in Vrindavan. Government has constructed several huts to accommodate widows, but all the hutments are full. So I have to stay on the street. Government gives pension and ration facilities to widows, but since I do not have any identity card, I am unable to take advantage of the government welfare schemes. Around 2,000 widows come to Sri Bhagwan Bhajan Ashram every day in 2 sessions of 4 hours each to sing Bhajan Kirtan during the daytime. These widows receive a token at the entrance of the Sri Bhagwan Bhajan Ashram to prove they attended the singing and prayers. This is a way for them to get 5 rupees for 1 session. For 2 sessions, they get 10 rupees, which is about 1 cent, and is good enough for the sustenance of some widows. Widows still wear white saris during the prayers in the main room of Sri Bhagwan Ashram in Vrindavan. But widows cannot live in Sri Bhagwan Bhajan Ashram. It is just a place where they go during the daytime to sing and earn a little money. They have to find an accommodation in town, which is not easy for destitute widows having no income. The tiny rooms that they live in are filthy. There is no sanitation, electricity, or water, in spite of the fact that they pay rent. I am in Vrindavan for the last 14 years. After the death of my husband, my son got married and he ill-treated me and did not give me any money. So I had to leave his house and take refuge in Vrindavan. I come to Bhajan Ashram in the morning and evening. I get 5 rupees in the morning and 5 rupees in the evening for singing bhajans in praise of Lord Krishna. My main source of income is from the donation given by the tourists. Medical checkups are conducted in the ashram once a week. But if the medical treatment is expensive, then we get discounts on the treatment. Charity by pilgrims at times provides a handful of uncooked rice and sugar to these widows. These donations may provide momentary relief to them, but it hardly improves their pitiable condition. No one goes hungry in Vrindavan. 20 million pilgrims come to this holy city every year, and many are eager to give charity. It is this generosity that has tragically led to an increase in the influx of widows and abandoned women. Nearly 90% of the widows in Vrindavan do not want to go back to their parents' or husband's family, fearing ill treatment, social stigma, and even starvation. I am Sarabala Mukherjee. I have come from Bengal when I was 16 years old after the death of my husband. I have been in Vrindavan for the last 84 years. I was married when I was 14 years old and I became a widow at 16. I had nowhere to go, so I came to Vrindavan in Bharat Tirth. Recently, I fell down and had to go down to the hospital on my own and get treatment. I had to pay 300 rupees for injections and tablets. My eyesight is becoming weak. I can see from only one eye, but I do not have money for treatment. More than food or clothing or shelter, what these forgotten women need is assimilation and inclusion. Guild of Service established Mahbari Ashram, a home for the widows at Vrindavan to make the lives of these widows more meaningful. Here the women live in comfort and companionship and care.
widows live in a family atmosphere. We can see the commotion at Madham as some of the widows have gathered here to change their shoes distributed to them a day earlier. Some of them want a different shade. In some cases, shoes are pinching them or are too big for their feet. After a little haggling, the matter is resolved, and they are all happy to get a new pair of shoes just before the winter sets in. These widows also get regular medical checkups. At the moment, the health visitor of the ashram is distributing prescribed medicines by the doctors to these widows. Most important thing is that there should be some sort of sensitization program, which will sensitize the community towards, the whole issue of widow. And the government should do a research to understand why that widows are coming here, what is it that they are lacking in their own social habitats or where they come. And I think the government should also have a fair dialogue, open dialogue with the widows, and the widows themselves should actually organize themselves into a federation. Right now, I think their voices are not heard in a proper way because they are all talking individually or under the banner of A or C group. They need to organize themselves into one single federation, and there should be an open dialogue with the government. At Mahabari Ashram, conferences held by Chairperson of the Guild of Service, Dr. D. Mohini Giri, are organized to sensitize people and the authorities about the problems of the widows living in Vrindavan. In the conference, steps were discussed to arrange accommodation with the help of the state government for the widows who have to spend their nights on the streets. This is necessary since most of these widows are either unwilling to return to their homes or their own families are not willing to take them back. There are serious questions which we need to ask ourselves. Can we leave these widows to be shunned and stripped of their rights? Or shall we provide them all the support to make them self-sufficient? India is a patriarchal society. Culturally, a widow cannot do anything without the support of a man or her family. Society owes these widows a mighty debt. We should not think that we can attain salvation by providing a simple meal for their hungry bellies. Until and unless we stop ostracizing these widows for being in a situation that is not their fault in the first place, and setting them free from the bondage and enslavement of human cruelty and religious superstition, their dignity and honor cannot be restored. And his team, can you please come on the stage and share your vision behind this project? Thank you for watching this film. But the actual idea was her. So if you want any question to ask her. Hello everyone, this is Shridhar Gupta. If you have any question, you can ask me. Anyone? Yes, oh yeah. Why did you make this document? Well, before the shoot, we went to Vrindavan. I actually went with my parents. There are so many, basically old age women begging. It was very strange for me why so much of old aged women are begging. Then I went back home and I researched about Vrindavan. Then I came to know that Vrindavan is also known as City of Widows. So then we had to do a class project. So our sir told us to think about some ideas. So I suggested why not make a documentary on this. Because I personally believe that old people are not our burden, they are our blessings. So this is very strange for me why this is happening. Thank you for watching. Our next film is Her Stories, a documentary by Faruda and group.
Her story revolves around the lives of three former mill workers and their struggles after the mill shuts down. The film also captures the ways in which they continue to negotiate their personal and political life. एक दिन जब प्राइम मिनिस्टर मुझे बनाएंगे ना तो उनकी पोस्ट दूंगी। पहले तो अपना देश ही रख दूंगी। महाराष्ट्र जो मेरा मैं जहाँ पर रहती हूँ उधर उसका पहला बदलाव करूंगी, उसके बाद में पूरा भारत देश का। खाने का जब मेरे को आंखों से दिखना बंद हो गया, मतलब थोड़ा नजर कम हो गया, तो फिर गवर्नमेंट में सिलाई का काम तो मैं मशीन पर नहीं कर सकती थी। तो फिर मैंने एक मतलब सोचा क्या करूं, बच्चे तो छोटे छोटे, वो लोग का पढ़ाई आधा रह गया, दिन बंद हो गया। फिर मैंने खाने का शुरू किया, वो भी फिर खाने के लिए घर में बुलाएंगे, खाना वाली करके घर पे लोगों को बुलाएंगे, खाते जाओ। तो किसका नजर कैसा घूमेगा, किसका नजर कैसा घूमेगा मालूम नहीं। अभी बच्चे छोटे, लेकिन बड़े होने के बाद इसलिए बोले बाहर ही करने का, फिर खाना घर में बनाने का और बाहर लेके जाने का। और जब भी कंपनी बन रही तभी हम लोग भी डिजाइन करते थे, डिजाइन करके दे देते, पर तभी हम लोग को क्या है ना, किसी का सपोर्ट नहीं था। अभी हम लोग तो डिजाइन ऑफिस में करते थे, यूनियन में करते थे, तो वहाँ पे कोई था कि हमारी जिम्मेदारी नहीं करता, व्यापारी प्रिंटिंग मास्टर है, हमारा बॉस है। अभी हम तो इंडिविजुअल करते थे आफ्टर साइड के बाद। तो हम लोग क्या करते थे, हमारे डिजाइन ले लेते थे, रखते थे और बोलते थे कि ये ऐसा है कि क्योंकि पैसे का प्रॉब्लम आ रहा था ना, हमको पैसा देना पड़ता था, मैं तो वहाँ सैलरी मिलती थी, तो ये फर्क होता था। तो मी आली मुंबईला तर एसीचे काम करून आले, पण इथे काय नोकरी चांगली मिळायला काही आशा नाही तिथे. कोणी म्हणाले एका दुसऱ्या नोकऱ्या कुठे शोधायचे, आपली तुझ्या ओळखी आहे, तर तुम्ही काम आहे, काय वाईट आहे घेऊन काम करायला, चांगला पगार आहे, पगार चांगला होता, ठीक आहे म्हणून जॉईन झाली. पण मी एक उद्देशाने जॉईन झाले आपल्याला, माझा एक हेतू होता, माझी जिज्ञासा होती, एक आशा होती, एक अपेक्षा होती. मला आतमध्ये जायचं, त्यासाठी मी आतमध्ये गेल्यानंतर जॉईन तर झाली, त्याच्यावर काम करायला गेलं, मला असं वाटतं तुम्हाला काम करायला फिरत राहायचं लागेल. पण मी तिथून संध्याकाळी तिथून कोविड इन्स्टिट्यूट दाखवला, मी क्लास जॉईन केला. लग्न झाली होती, गव्हर्नर पण होती, पण घेऊन मी जायची आणि मी तो पॅकिंग क्लास जॉईन केला. त्याला पॅकिंगला म्हटलं, आता कम्प्युटरला आहे, त्यावेळेला पॅकिंगला म्हटलं. पॅकिंगला जॉईन करून माझं 30-40 झालं, मी पास पण चालू झालं. आणि मी आता आतमध्ये फॉर्म भरून मी ट्रान्सफर करून घेणार तर संस्थाची भावना आहे, सगळं उद्ध्वस्त झालं सगळं, आणि मला जरूर आतमध्ये त्रास करत होता. कामं
कामं मिळत नव्हती म्हणून आम्ही बाहेर कामासाठी करत होतो. अशा वेळेला आम्ही 6 रुपये रोजानं काम केलं. तेव्हा आम्हाला 700 रुपये पगार होता महिन्याला बिलमध्ये. नंतर आठवड्यानंतर एवढा पगार कमी दिला, आम्ही 6-6.5 रोजाने काम केलं, म्हणजे महिन्याचे 200 रुपये पगार. एक ठिकाणी असं काम केलं की टेरेसवरती असा अग्नी पेटवायचा आणि त्याच्यावरती चव ठेवायचा पाण्याने भरलेला आणि ते वरती सूर्यप्रकाश आणि खाली उकळतं पाणी त्याच्यामध्ये ते लोक जडीबुटी टाकतात ते जे मारत होते ते आणि ते उकळत ठेवायचं. खूप ज्या उकळल्यानंतर मग ते आपण ती दोन्ही घ्यायची जाळलेली असलेली तिकडे बाईने ते घ्यायचं दोन्ही असं ते पकायचं आणि तो मोठा झाडा देतात. त्या झाडाने ते गरम गरम असलं ते जडीबुटीचं सगळं ते काढायचं झाड असतं आणि त्या दोन्ही टाकायचं आणि दोन्ही कमी केलायचं तिकडे पिळणार वेगळे पिळणार ती उलट मी सुलट तेव्हा तो पिळत असला लागतो आणि पिळल्यानंतर मग ते रस खाली होतो. मग खाली टोप ठेवायचा त्याच्यामुळे ते औषध पडायचं. नंतर मग ते औषध बाटलीत भरायचं. त्या बाटल्या छोटे छोटे औषध येत असतात ते एका गोडामध्ये राहायचं. त्या गोडामध्ये काही बाटल्या चांगल्या असायच्या काही फुटलेल्या असायच्या त्याच्या आपण चांगल्या सोडून घ्यायच्या पण स्वतःला फुटलेल्या बाटल्या किती हाताला लागत होती का असं लागायचं ना. मील बनवने के उसके जुड़े हुए जो छोटे मोटे कारखाने थे जैसे कोई पार्ट है मशीन का बनाने का कारखाना या धागे का कुछ कारखाना उसके ऊपर गारमेंट चल रही थी कपड़े सिलने का बुनने का काम चलता था वो सब वो धीरे धीरे मतलब एक पे खाला डाल के जैसे आप लोग में बोलते मराठी में कि घर का जो मेन तंबू रहता है बांधते में तो मेन खंभा रहता है उसको जब भिगा दिया ना तो सब पूरा घर मिल जाता है. उसी तरह से बंद करके पूरी मुंबई को मिला दी. तो मैंने जब ये संगठन में ज्वाइन किया वो टाइम ऐसा था कि देश पूरा बंद होने की आ रहा है. फिर हम लोग को हमारे जो इंडियन थे आरएस तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहे थे मेरी बंद होने को आ रहा था वो सब नहीं बंद कर देते सपोर्ट था. फिर अभी जाएंगे किसके पास तो संघर्ष समिति ऐसा ऑप्शन था हमारे सामने तो सब मिल वर्कर में ही मिलके बनाया था. और वो संघर्ष समिति जब बनी तो फिर हम लोग को हमारा आवाज सुनने के लिए कोई आए ऐसा लगने लगा. हर फ्राइडे को मैं जो मीटिंग रखती हूँ उसमें वर्कर तो बहुत से आती है. उसमें से बहुत से वर्कर को अभी लोग कटावा भी मिल गया है तो नीचे रूम अभी लगे उन लोगों को कुछ लोगों को ताबा भी मिल गया है कुछ लोगों को मिलना बाकी है और कुछ लोग तो मतलब क्या मतलब पहले जो पागल में हम लोगों की गिर गए थे वो लोग अभी आगे ठीक थे. आमच्या पाठीशी खंबीर कोणी नव्हतं. आमच्या पाठीशी संबंध नव्हता. आमचे विचार आमचे संस्कार आमचे चांगले विचार आमच्या पाठीशी होते. सगळे म्हातारी माणसं आता काय सगळ्याची वय आणि सातारी फिरली कसे संत करतायत कसे जातायत आणि ते लांब मत म्हटलं किती लांब कुठून काढतात जागत काढतो विधी पर्यंत तेवढा रस्ता लांब आहे त्यातून ती म्हातारी म्हणजे एक म्हातारी अशी अशी करून काढते. त्याला म्हणजे लावला किती मेहनत. अभी मैं ड्राइंग करने आई इतना 20 साल मैंने ड्राइंग की 20 साल 1-2 साल में 20 साल तो तुरंत अपना करियर चेंज करना इतना आसान नहीं था. मराठी हिंदी मैंने क्यों लिया कि उसमें मुझे रोलिंग मिलेगा हर महीने का पैसा मिलेगा. इसमें तो मुझे पैसा मिले या ना मिले कुछ श्योरिटी नहीं थी. ड्राइंग क्लास नहीं चल रहा है नहीं कोई पैसे दे तो मराठी में लिया और जब भी अभी अच्छा उसमें पैसा मिलता है तो मैंने ये भी किया. हाँ ये फोटो है
बटाटा टोमॅटो आहे म्हणा बघितलं नाही टोमॅटो कधी हा टोमॅटो आणि हा बटाटा आहे मग त्याचा कलर काय आहे तो स्टार्ट करतो म्हणजे आज गावात राहिला मुली बघितली आणि कसं मुलीला लहानाचं मोठे केले तुम्हाला इतिहासाच्या डोळ्यासमोर आले इतका इतिहास त्यांच्या डोळ्यासमोर असल्यामुळे त्याला ते काय पुढच्या स्टेजने मागता शाळा मला हेच लागेल की आता शाळा झाल्याने 40 दिवस काही कधी आम्हाला नाही माहिती म्हणून त्या सगळ्या मुलगी बघतच काही हे केलं स्वतः जाणीव करून की आता चांगला मुलगा असेल तरच करायचं नाही दोन लग्न केली नाही 30 वर्ष झाल्यानंतर दोघी लग्न केली आणि त्याचं काही स्वतः चांगलंच करून घेतले दुसऱ्या जरी लग्न केली पण खूप छान झाले काही टेन्शन नाही मुलं जरी चांगली मिळाली त्यांना मेरी माँ ने बोला कि अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए क्योंकि मेरी माँ के ऊपर ऐसे गुजरी मैं 19 साल की थी और मेरे पिताजी बहुत बीमार हो गए और घर वाले भी कोई पूछता नहीं था उनको क्योंकि उनकी शादी अलग कास्ट में हुई थी मराठी में तो सपोर्ट कोई नहीं था मीन्स समाज क्या बोलेगा समाज आम्हाला हे करेल म्हणून आम्ही तिला विचारणार नाही तो ऐसा घर से ही घर में रहने को भी कोई बात नहीं करता था तो तभी मेरी मम्मी ने ऐसा ठान लिया कि अगर मुझे बेटी हुई तो मैं उसको पढ़ाऊंगी उसके पैरों पे खड़ा तो उसी तरह मैंने भी ऐसा हमारे शादी होने के बाद तुम्हारे हस्बैंड ने ना बोला मुझे उसके हिसाब से आप चलो मैंने भी क्योंकि मेरा ही ये समझना है मैंने बोला ऐसा कुछ करूँगी दादाजी और बोलते ना ये नहीं बताना अपने हस्बैंड को नहीं पसंद नहीं करना क्योंकि हाथ में जब पैसा नहीं और बच्चा किसी चीज के लिए जिद करता होगा तो वो बहुत ही मुश्किल हो गया मतलब उस दिन का याद भी यदि निकाला जाए तब आपके सही होगा याद भी निकाला जाए तो भी आज मतलब वो दिन का याद आएगा तो भी पूरा फिर आंखों के सामने आ जाता है बच्चों को जब खाने के लिए किया हो या किसी चीज के लिए किया हो वो मिलता नहीं उस तरह का मतलब जीना नहीं जीने से अच्छा था म्हणजे आम्ही गेली कामगार एकामेकाशी अशा नात्याने वागत होतो ते आमचं नातं फार घरच्यासारखं होतं तो आमच्या परिवारच होता तो आमच्या कुटुंबच होता आम्ही ते परकेपणाने नव्हतं खूप आपुलकी खूप प्रेम मोठ्या सांगत म्हणजे दोन्ही कामगारांच्या प्रेमाची उपमा मी गुळाबरोबर गुळाच्या गोळीसारखी साखरेची नाही साखर गुळ तर तीव्र चमचमते गुळ हवी असंच मेरे को खाना बनाने का बहुत शौक है और खिलाना क्योंकि ना हम लोग मिलने के ना हर एक का बर्थडे हम लोग मनाते थे मुझे बच्चों का और ज्यादा से ज्यादा केक करने वाले मैं तो केक बनाना सब बाहर आया ऐसा क्या कहते हैं तो ये नहीं थे कि डॉल बना कोई भी औरत ने खाना वो अच्छा बनाती थी जो विंटर टाइम में उसने लंच चालू किया तो ऐसे जगह भी नहीं थी उनके पास तो ऐसे उनका सुन के ऐसा प्राउड होता है कि उसने हार नहीं मानी मेरे को लगा तो ऊपर से रोटी टाइम का रोड पूरा खाली मिलता है वो लोग आके हम लोग परेशान करेंगे हर दिन के मैं उसी होगा कभी ऐसा लगता है सच में जाना चाहिए बोलते और करना चाहिए दिलाना चाहिए लेकिन अपने को सपोर्ट देने के लिए कोई पब्लिक आने वाला नहीं हमारे मराठी में बोलते हैं शिवाजी
सबको अच्छा लगता है, लेकिन सिवा कि हमारे घर में पैदा मत होना और दूसरे के घर में पैदा होगा तो अच्छा रहेगा। वैसे ही क्या आधुनिकीकरण करने के हिसाब से सिंगापुर बना रहे हैं। अरे सिंगापुर बनाने के लिए मेन बाबत तो चाहिए, रोटी कपड़ा और बाबत तो चाहिए ना। आखिर क्या बदलाव लाना चाहते हैं? ये नाता अलग है, ये दोनों काम करने वाले इसका काम करने के लिए ये लागे बांधे का विरोध है, करना माने तो बहुत सारे लगते आता सुद्धा आम्ही वेगळं ना तर आमचे नाते अरे त्याच्यासाठी विरोध मिळत पण एकमेकांना भेटलो ना त्याला एकमेकांना मला ते शंकर संस्काराने घडण झाले ना तरी आम्हाला सुख दुखल्यासारखं वाटेल. सुख संपलं आता तरी घेतलं खरं झालं संपलं सारं पण तेव्हाच आम्हाला प्रश्न होणार आहे की त्यात काय मजा होती ना. काय तुमच्या हिंदीमध्ये बोलतात तो इंतजार मी मजा मिळत नाही असा प्रकार नाही. It's a request, ladies and gentlemen, that you do not use your mobile phones while the screening is on, and kindly do not leave the auditorium either. Okay, now moving on to our next film. Ladies and gentlemen, the next film that we are going to screen is all about finding oneself. In today's chaotic world, in order to achieve various things, many a times we lose ourselves. And this film by Miss Samedika Dutt portrays the journey to reach oneself. The Search, ladies and gentlemen, a documentary by Samedika Dutt. Don't lose yourself, a man once said. I was 7 or 8 at the time, and I had just come back from my boarding school for the holidays. To be honest, I can't remember who he was, but a decade later, his words haunted me as I sat in my room alone, struggling to come to terms with my life. For years, I had suffered from depression. The first incident I can remember happened when I was only 13. As I walked back from the dining hall in school after dinner one night and was overcome by an urge to sit in a corner and weep. I barely managed to reach my dorm before bursting into tears. My friends came running to me, but their anxiety didn't stop my tears. These overwhelming, unexplained feelings frightened me. By the time I was 17, these outbursts were happening about once in 2 months. Most of the time, I lived my life quite normal, but then my mind
seemed to take a life of its own. Initially, they happened for no reason, but now everything became a reason. A frown from a teacher, a gold medal in a race, a long queue at my school's tuck shop. It didn't matter whether the incidents were happy or sad or indifferent. All would be twisted by my mind into something horrible. One incident I recall vividly was a call from a friend. We chatted for a while and then she went saying her mother was calling her. I spent the next 2 days agonizing over whether she hung up because she hated me. It was like a demon had possessed my mind, and all this while a little voice in my mind kept telling me how worthless, hopeless, and stupid I was. For most of the part, I kept all this a secret because I was scared, confused, and insecure. Not like my friends and family were unaware of my problems. They tried more than once a day to talk to, but it was too deeply engraved in me. I realized that my lifestyle at home and at school played as a major reason for my depression. Being disliked in school for the wrong reasons, seeing my parents fight like teenagers over each word uttered from either of their mouths. When I was 18, I concluded that the only way to stop my suffering was simply not to feel anything. This wasn't as difficult as I thought. Since I was heavily involved with sport and co-curricular activities in school, that I had no time to think, much less feel. At first, the numbness was a huge relief from the mood swings, but it wasn't long before I realized that there was a vast emptiness in my heart. I could feel no joy, hope, or pain. It got to a point where I had to be physically wounded to feel something. I had become afraid of being myself. I felt as though I was being chased by a large black hole that's going to consume me whole. When I finished school, I decided that I'm going to start a new life. That I had enough of this living hell. Otherwise, I was going to kill myself. Fortunately, I never got the chance. One afternoon, I went to visit my 94-year-old, always independent grandma, who was actually living a life of luxury. But somehow didn't seem to think so. She would find fault in everything in her life. She failed to see how lucky she was to have young company sitting beside her through all her waking hours, talking to her so she wouldn't feel lonely. I mean, how many sons or daughters do we know of who actually pay so much heed to their ailing parents? All her demands were seen to. In spite of this, she still seemed sad, always complaining without a reason.
She was turning a very beautiful and idealized woman into an absolute wreck. It was that very day I started seeing a lot of myself in her, and I realized that I was heading in the same direction. This incident jolted me to my senses. I could see myself being destroyed in my youth. So I started going out, visiting new places with my friends, traveling on my own, talking my thoughts out, leading a fairly independent life as opposed to my everyday positive life. I found myself suddenly not caring about the way I was dressed or why people were staring at me. I was living for myself and I became myself again. It was like I was born into a new world, a world where only I lived. I can now finally wake up without those ugly little things called pimples on my face. Now, I would like to call upon the director of Her Stories, Faruda and Brooke, and
The source Samvedika Tarde. It seems they are not here. So moving on to our next film. Next film is Separate Sky, a documentary that is based on how people are suffering in India due to the problem of open defecation. Open defecation passes a threat not only on the security of a person but also leads to many medical problems in women and children. Please be seated. Let's watch our next film, Separate Sky by Jasmeet Singh. The danger faced by women going to toilets outdoors in urban and rural India was made clear when two girls were ambushed, gagged, and hanged from a tree in Badani, a small sleepy town of Uttar Pradesh. But defecating in the open is normal for most people living in Indian slums, townships, and villages. In India, as per the report on drinking water and sanitation recently presented to Parliament, indicates that 60% of India's population and 70% of women don't have access to a toilet, and these people defecate in the open. According to a report released in Geneva on the progress on drinking water and sanitation in 2014, India continues to be the country with the highest number of people, 597 million people to be precise, that practice open defecation. Which means more people in India practice open defecation than the total population of two continents, North America and Australia, put together. In the heart of India's capital, Delhi, the railway tracks become open toilets for most slum dwellers living in Kathputli colony near Shadipur Depot. Women walk out to the shrubs near railway tracks twice a day at the crack of dawn and the onset of dusk. For the ladies living in Sanjay colony in South Delhi, the open space just below the metro railway tracks, which has a little vegetation, is the only toilet most of them have ever known. They walk out together in groups for safety. After they reach the area, they separate and space out for a little privacy. Savita, aged 45, wakes up her daughter at 5 a.m. every morning so that they can freshen up before the public starts walking in the open spaces where these people defecate. Each takes a bottle of water and they set off for their early morning routine. We have been living in Sanjay colony for the past 15 to 20 years. We have no facility of proper toilets. We do not have regular water supply. We have to reach in time to get the water from the tanker, otherwise we have to depend on others for water. When we go in the open to ease ourselves, men throw stones at us or harass us. Sometimes the people who own the land also use abusive language and do not permit us to ease ourselves in their home. Going alone to the toilet is not even an option for women and girls belonging to poor families. It is important to tread carefully during daytime for women as they have to defecate in wide open spaces near the railway tracks. It's literally like an open toilet, and many boys take advantage of the situation to harass women who come here. Women have no option but to bear the humiliation on a regular basis. At times, these women have to shout and rebuke peeping toms if the situation demands to save their modesty. 1 in 3 women in the developing world will be affected by harassment, violence, and in some cases rape as a result of having to leave their homes after dark to find a place to go to the toilet. Darkness gives the women cover and a degree of privacy which is very important to them, but in some ways it makes them more vulnerable to drunkards who are always on the lookout for easy prey in the darkness and in excluded places where these women defecate.
Women are keen to get the process over as quickly as possible to avoid any kind of confrontation with bad elements. Toilets are not so important for men, but women cannot throw tantrums about having a toilet in the house. Men can go anywhere, anytime. It is only women who need protection and cover. Even in the cities, it is common to see men in India urinating in public against a wall. But women have no choice but to contain any desire to urinate or defecate, if necessary, for hours during the day, as they have no privacy due to lack of toilets. Most times, women have to control their urge, especially at night, due to fear. There is a long wait until the next trip to the open-air toilet, which will be after darkness falls, some 14 or 15 hours later. At night, if a lady feels the need to ease herself, men have to accompany them so that they are safe while they defecate in the open. Sometimes we have to stay at the open site for 2 or 3 hours if the person's stomach is upset. The unspoken rule is that the men go to the toilet only at dawn, but boys sometimes break this rule in order to harass or molest members of the opposite sex. The women tell stories of catcalling and groping, though they will never admit that it has happened to them. They say that it only happens to others. This humiliating daily routine of using plastic containers to answer a call of nature, staying all night with a soaked sanitary towel, and not having enough privacy to take a simple shower dominates these women's lives. Not only does it place them at risk of health problems like urinary infections, chronic constipation, and psychological stress, but also hinders their full participation in their community's activities. Most of my patients are women and little children. The major problem that I see is women who come from these slum areas of anemia, malnutrition, poor infestation, living in very poor hygienic conditions, which exposes them to diseases like scabies, tuberculosis, and more poor infestation. We are undernourished, we have a lot of children, and their basic hygiene is not very good. Open defecation is a serious public health problem, especially affecting young women and children. It can expose people to diseases such as polio, giardiasis, hepatitis A, and diarrhea. In 2012, nearly a quarter of all young children who died of diarrhea worldwide were Indian. Open defecation is a serious public health problem. A single gram of human feces contains as much as 10 million viruses, 1 million bacteria, 1,000 parasitic cysts, and 100 parasite eggs. Constant exposure to fecal germs can also lead to stunted growth, a condition afflicting almost 61 million Indian children. More than 44 million pregnant women suffer worm infection as a result of poor sanitation every year. A huge number of girls leave their education as they reach puberty, as the shame of having no private place away from their classmates during menstruation is too much to bear. Most of the slum dwellers and villagers face challenges of waste disposal, drainage, and lack of sanitation. The health and hygiene of these people is pathetic due to non-availability of basic amenities like water and sanitation. Even if sanitation facilities are provided, it is out of reach for poor people. The public toilets built by the government or private agencies are poorly constructed and maintained. More importantly, people have to pay 2 rupees each time they use toilets. If women want to use clothes washing facility in these toilets, they need to pay 3 rupees. We have to pay 2 rupees to use the toilet facilities. If we have to use toilet several times due to bad stomach, we end up paying 20 to 25 rupees, which is exorbitant. How can a poor person afford to pay so much money for using toilet facilities? We have to also feed our children with meager earnings. Daily humiliation takes a toll on the dignity of poor women who cannot afford a toilet. Often, men hide in the areas where women go to answer nature's call.
They humiliate and sexually harass these poor women and girls. In rural areas, incidents of rape and sexual harassment against women is dramatically rising due to the lack of toilet and sanitation facilities. After the Badani case, many NGOs are coming forward to address this problem. Sulab International has promised to construct toilets in all the houses of Katra Shahadatganj village of Badani, where two sisters were allegedly gang raped and murdered while they went to relieve themselves in the fields. Open expression, I don't think that's guided total problems we are having. The first thing was to invent the comprehensive curriculum. The theme that in nights are totally has to stop education to create it. Because the source system, because social process. So I invented the technique of Sulab Shochala. It's a two-week progress of this strategy. It is technology that two weeks. One is at a time. Other thing is technology. And first of all, switch over to another. And in the first 1.5 years, it becomes very effective. So this technology is helping on the one hand to stop the efficacy of it and also take the practice of manual cleaning of The complexity of sanitation beliefs and practices is easy to overlook, especially when census data only counts the drains owned by households, not the behavior of individuals. But mistaking a problem that is partially about access and affordability for a problem that is only about access and affordability, and thereby overlooking the challenges of changing ideas and changing behaviors, will not eliminate the deadly and enduring consequences of this practice. Inadequate sanitation is the major cause of disease worldwide, and improving sanitation can have a significant beneficial impact on health both in households and across communities. Sanitation is the hygienic means of promoting health through prevention of human contact with the hazards of waste. In India, security of women, health and dignity has become a major social concern. If providing basic amenities like water, sanitation, and toilet facilities can reduce the threat perception to millions of women, then the government should take steps to provide these facilities. Our next film, ladies and gentlemen, is one of the international films that we have received, and it's a documentary by Mr. Guy Gordon, and the film titles The Being from Elsewhere. Enjoy the film. Donc, je m'appelle travailler Marie-Miel, dans la vie des gays, André et tout. Je fais métier depuis que j'ai 18 ans, donc j'en ai 56, ça fait 30. J'aime mon métier, moi je trouve ça extraordinaire de faire ce métier. Moi j'aime séduire, j'aime l'argent, de toute façon, ça va de soi. Donc pour moi, c'est
c'est pas une contrainte, c'est agréable. J'aime bien les choses. Vous travaillez tous les jours? Ah oui, hein. Je viens tous les jours. Je suis obligée pour les deux garces. Il faut pas leur donner à manger. Il y en a 4 dans la cave, donc il faut s'en occuper. Mais c'est vrai que je viens. Bon, des fois j'arrive à 10h, des fois j'arrive à 11h. C'est l'avantage de faire notre métier, on fait ce qu'on veut. Si j'arrivais à 3h de l'après-midi et que je remets à 5, je peux. On n'a pas de contrainte. C'est pour ça qu'on fait le métier d'ailleurs. On fait ce qu'on veut. On fait rien 3 jours, mais on fait rien 3 jours. Ça, c'est... On n'a pas de salaire, ça c'est vrai. On a envie que c'est nous-mêmes. Hein. Faire l'argent, c'est nous. Ah oui, on peut travailler un plan avec ça. Ah oui. Et comme je suis très aimable et très gentil, il me sort plus tôt. Je suis un peu spécialisé dans le fétichisme, la domination et des trucs comme ça. Alors il ne faut pas être douce. Moi, je ne sais pas être douce maintenant. Je travaille avec des Italiennes, des femmes, qui viennent me dire bonjour, une copine, je comprends vos idées. Allez, je travaille ici avec des amis dans le quartier, des Françaises, et des fois, même, on arrive à deux. Elles adorent travailler avec moi, parce qu'elles ne doivent pas se faire arriver sans arrêt. Et le client n'est pas mécontent pour ça. Hein. Quand vous regardez les reportages à la télé, quand moi j'entends ça, moi je suis outré. Hein. 30 €, tu sais, je suis outré. Je ne dis pas que ça n'arrive pas. Je ne dis pas. Non, hein. Non, c'est pas ça faire de l'argent. On m'a jamais appris à travailler comme ça. Je ne saurais pas. Je me sentirais très dégaré, je ne saurais pas. Moi, je ne sais pas comment ils peuvent vivre avec tout ça dans leur tête. Je me demande des fois. Pour moi, c'est facile, ils sont gentils, je me dis. Et vous croyez que c'est, comment dire, vous dites dans leur tête, vous, est-ce que vous avez aussi des fantasmes, des choses comme ça? C'est masculin, pensez? Non, c'est pas masculin, mais. Enfin, le sexe, pour moi, ça c'est plus du sexe, c'est des réactions, c'est du sexe. C'est un, je sais pas si tu. Ah, toi, je disais comme ça comme ils sont ici. Peut-être que je les pervertis. Oui, peut-être que. Attention, moi, c'est ma discussion, c'est-à-dire que j'ai un peu de fort, normal, hein, alors, directement, moi. Je crois que. Ensuite, j'ai jamais vu ça. Tous. Après ça, c'est. Je sais pas que je suis un soutien, et il y en a qui prennent goût à ce jeu. Et puis il y en a que vous ne voyez plus jamais, hein. Ça arrive, hein, ils sont laissés faire dans les fantasmes, hein, et puis après ils sont dégoûtés d'eux-mêmes, peut-être. Mais il y en a qui sont complètement en femme, ils sont vite comme ça de voiture, et ils sont très oui, mais complètement, hein, même pas le costume, rien, enfin. Alors c'est-là, c'est lui, je te dis, tu ménages aller sur la rue. Hein? T'as compris les espèces de vieilles putes. Ils sont obligés, là, ils peuvent faire comme ça. Mais maintenant, tu vas la rue ici. Ah, il a pas de l'argent, salope. Il y en a qui disent, non, justement, non. T'es une pute. Crime. Alors je disais que ça fait marcher. Je te parle la gueule, là, oui, c'est gay. C'est comique. Alors je les entraîne à marcher. J'allais marcher comme une pute, fais ça, 5 ans. Moi, j'ai toujours travaillé pour moi. J'ai eu mon petit Jules, là, Alain, ou enfin, c'était pas une marque. Hein, qu'est-ce que les filles des militaires de carrière qui ne sont pas dépensées à au restaurant pour manger? Pour vous connaître. Hein? J'ai vécu avec un Lavoisier avant d'être avec Alex, Guy. J'en faisais bon rapport avec lui. Hein, je l'ai connu, j'avais 14 ans, 15 ans. C'est une salope. Et pas de niveau, parce que bon, il m'a jamais forcé. Hein, moi, je faisais plus que mon âge, de toute façon. Hein. Moi, à 15 ans, j'en avais 30 ans. Ben oui,
habillés, coiffés, maquillés d'une certaine façon. Il y a 14 comme ça a commencé à se bouger dans ma tête et à se rencontrer. Puis ma mère m'a fait passer quand même aussi. Hein. J'ai dit, je suis un modèle. Hein. Non, 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 elle n'a pas eu facile avec moi. Hein. Contre ma soeur et mon frère qui étaient des anges, parce que tout le monde, hein. Exactement. L'être obligatoire. Elle a dit, mon Dieu, j'ai mis ça au monde, c'est pas possible. D'ailleurs, elle a plus jamais avoir. Je suis d'avoir l'enfant après moi. Là, c'est une petite topique. Quand je suis passé, j'ai tout arraché. C'est vraiment le diable. Quand j'avais fait 16 ans, je faisais des études de coiffure aux Américains. Et je travaillais dans un petit salon où il y avait plein de filles vers le chef qui venaient. C'était le fanatiques. Il y avait des cabarets, je sais pas. Je me disais, qu'est-ce que tu fais là? C'était une physique. Oui, je t'avais dit, en coiffure, c'est passé, on chante peut-être tout le temps. Hein. Et puis j'ai commencé à travailler dans les circuits privés, où les bouchers. Là, j'avais compris, hein, quand les patrons me faisaient monter, j'avais compris. Avec job, hein, vous donnez des sous. La première fois que j'ai tourné, hein, de faire un petit peu dans la fiche, hein, parce que, oui, il ne faut pas être. Hein, oui, hein, je n'ai jamais été bête, quoi, pour ça. Ma mère se doutait bien, elle était en instance de divorce, elle a eu des problèmes avec son mari, comme dans toutes les familles. Hein. Et voilà, j'ai commencé à 18 ans, j'étais à la gare du Nord, à une bâche, en vitrine. Parce qu'avant ça, c'est pas possible. Hein. J'ai déjà eu tous les ennuis du monde, parce que j'étais des vitrines si jeunes. Oui, parce que c'était des filles plus âgées en général. Hein. Et puis moi, j'avais une nouveauté, quand vous êtes ancienne et vous voyez une fraîcheur. Il y a toujours un genre de jalousie. Et j'ai commencé à travailler à 18 ans. J'ai une très bonne patronne. Non, allez, ça. Bah, non, allez, non, même pas 50 ans. Oh, on va là-dessus. Oh, ils sont pétissants. Alors, j'ai démarré, j'ai pris un petit appartement tout seul. Ma mère se doutait bien que l'argent n'avait pas de. Elle avait des coups de téléphone pour dire quelque chose là-dessus. Mais ma mère était une personne très intelligente. Elle est rentrée dans le baroussaille parce qu'elle avait donné tous les renseignements. Et comme j'avais montré les photos de mes parents à ma patronne, hein, quand vous avez une patronne qu'on est là 1 an, 2 ans, c'est vrai, on a des liens hein, quand même qui se forment mal parce qu'on a quand même un métier. Après, c'est la consommation, surtout. Je suis autopsychologue. Bon. Ben oui, quand il paye des unités à 7000 belges à l'époque, pensez bien qu'il ne paye pas pour vos yeux. Enfin, si. Ah, il fallait quand même faire un petit vol, hein. Le clôture, on peut pas. On a inventé n'importe quoi pour faire de l'argent, c'était notre métier. Et j'en ai dit à ma mère, à ma patronne, c'est pas maman, ni ma soeur. Et elle rentre à 4 du matin, un jour. Et puis il y avait des grands salons comme ça, qui vous installaient, il y avait le salon derrière, les clients. Et je reviens, j'avais pas des clients, il y avait une soirée à moi. Oh, j'ai appris par besoin d'un mec. Elle avait compris, hein. On gagnait bien sa vie, donc on ne comptait pas. Voilà, on ne comptait pas. Tous mes anniversaires, j'ai invité 30-40 personnes, donné des soirées à table. Bon. Oui, maintenant je ne fais plus jamais, hein, mon anniversaire, je me vois le passé, je suis ici. Mais c'est comme ça. Oui, vous avez quelques petits amis sincères qui vous disent un petit mot, un petit message. C'est fort limité maintenant. Évidemment, moi je travaillais, donc c'était facile de faire des fêtes, je payais. Les rares sont des amis que vous avez en retour, vraiment, hein, qui vous invitent aussi. C'est rare, hein. Oui, je peux pas l'expliquer, là c'était une personne charmante, vraiment. Oui, j'en ai quelques-uns, oui, j'ai des copines sincères qu'on a commencé à travailler ensemble, j'ai des copines qui ont arrêté de travailler parce qu'elles n'en pouvaient plus, psychologiquement. Moi, je suis très forte. Moi, je suis très forte. Moi, j'aime mon métier, j'aime ça. Prendre des sous, j'aime ça. Est-ce que vous avez de sortir avec les clients d'aller ou... Ça m'est arrivé 2 fois.
Qui veut du travail, 10 jours. Tu veux que c'est comme ça le deux. Et je n'ai quand même putain, le con, fallait se taxer, je me tapais des fois pour la lettre et tout. Il dépensait sans compter, il m'a payé des robes, 900 euros, des chaussures en cristaux, là, 500 euros, il m'a tout ce que je voulais. Mais ça faisait 10 jours, il allait au jeu. Je te donne 10 000 euros par mois, pour nous monter les règles, après, je me suis rendu compte directement qu'il n'y avait plus. Enfin, 10 jours. Et là, pour ça, bon, je suis allé faire tout ça, machin. J'en ai eu un autre aussi, qui m'a donné, pour sortir avec lui à l'après-midi, 2 messages. Je l'ai saoulé, il croyait que ça allait bon. Qu'est-ce qu'il va voir? On va regarder. Je suis des copains. Et tombé sur mon dos. Voilà. Moi, je suis mis dans le train, j'ai encore pris l'image entre les restait, je lui ai laissé 20 euros. Tu dis ça. C'est des vieux de 90 ans, hein, qui sont plus de moi. Oui, il n'est pas tous les 2 ans. Oui, il faut tout dire. Oui, oui, j'avais mon vieux Maurice, là. Le chant de la Ligérette, on a fait les gens. À 11h du matin, il venait le signe, il était mercredi, il avait le sens. Et à 11h15, il prenait son train. Ça vient en femme, je crachais dans sa gueule, je disais, bon, alors que j'avais quelqu'un qui faisait la route, je mettais la patte à genoux, et j'avais des copines qui rentraient, je crache la gueule de cette saleté. Et je donne un cadeau à la copine-là. Elle a craché, il faut payer sa famille, là. Ah bah oui. On a occupé la chambre. Il m'a coûté les 1200 jardins. Oui. C'est tous les clients. Beaucoup, hein. Ça, c'est mon budget en cuir, ça, je vais. Et tout le reste, c'est pour le client. Ça, c'est mon budget à est-ce que je vais. Et ça arrive que les clients arrivent avec des clients? Oui, hein. Ah oui, ça arrive. Qu'on m'apporte ci ou là. J'avais un jeu qui était tout à fait original, il m'a apporté un pull en même. Donc, il y a pas une chose qui n'existe pas ici. Il était noir, avec un col roulé. Je croyais que j'allais me toute nue, que j'allais tout enlever, que je faisais juste pour l'argent. Je dis une chose. Là, il y avait des hommes. Et moi, j'ai dit, comment ça tu m'as? Ah bah oui, je lui croyais là, tiens. Ah, je lui dis, pas donner assez, donc je ne me garde pas en dessous, elle dit. Et voilà. Vous êtes une auditrice? Oui, c'est des rôles, c'est des rôles. Et il ne faut jamais rire. Ce qui n'est pas évident, hein. Parce que des fois, j'ai les modes avec un ami, c'est vrai, il ne faut jamais rire. Il faut rester professionnel. Et c'est ça que beaucoup de filles savent faire. Rester dans le rôle, rester dans. Sans écarter le rire. J'en ai qui se filment, hein, que je dois prendre, que je dois filmer. Il y en a qui qui se filment, je dois. Moi, je ne sais pas envoyer un appareil photo, je dois être joli, hein. Je ne sais pas où sont les boutons, je les regarde. Non, c'est vrai que chaque fois, c'est bien ça, hein, parce que bon, ça ne me dérange pas plus que ça, c'est pas moi, c'est. Et c'est vrai que des fois, on encaisse, hein, des fois, quand. Tout n'est pas rose ici, hein. Parce que je dis oui, tout n'est pas rose, hein. Il faut voir les insultes, les gamins qui passent, parce qu'il y a des écoles ici, il faut tout voir, hein. On en suit pas, c'est quoi, hein. Comme je vois les filles qui travaillent là, elles ont du courage, hein, que des connaissances. Parce que là, elles se font agresser à coups de pierre, à coups de goutte, à coups d'œufs. Ah oui, hein. Ah oui, hein. Quand vous faites la rue, vous êtes à l'arrivée de n'importe quoi, hein. Ah, moi, je ne fais pas. Je ne fais pas. Moi, j'ai besoin de moi, j'ai besoin. Dans ce regard, j'avais 2 grands sacs là, plein de broles. Malgré tout, ça m'a toujours la même chose, hein. Mais c'est une sécurité, en fait. Il faut toujours se méfier, c'est la même chose, il faut se méfier tout le temps. On est toujours des gardes, hein. De toute façon, Amazon peut toujours être violent. Il faut toujours se dire ça. Ça arrive.
moi, je sais gérer, en fait. Puis, je ne suis pas quelqu'un de cette intimité, hein, je ne suis pas la petite. Quelqu'un qui me l'antenne, hein. Non, mais bon, ça aide quelquefois. Je ne suis pas invincible, hein, je ne suis pas. Mais bon, avec la psychologie, on arrive souvent à se débêtrer. Ici, depuis 10 ans, j'ai remboursé 2 fois. Parce que j'ai bien dit que je ne vais pas me faire dévorer pour 50 euros. Quand ça tourne vraiment mal, que je sens que c'est pas ça qui les intéresse, mais autre chose, je rembourse. Hein. Si c'est arrivé 2 fois sur 2, c'est tout ça. Mais ça n'en rien faire. Hein. Il les déshabiller, il commence à me miner, je dis, oh, tu te prends. Hein? C'est quoi ça? C'est quoi? T'as un grain ou quoi? Allez, prends ton argent à cavale. Avant, quand je travaillais, il y avait un tel, quelques vidéos qu'on connaissait. Il y a eu l'ouverture des frontières en 89 ou en 90, c'est tout à fait bon. Ça nous a fait un tort considérable, hein, ces Sud-Ouest, qui sont des canons, il faut dire ce qui est. Il y a les Sud-Américains, il y a les travestis colombiens, Sud-Américains, les Vénézuéliens. On va aller voir sur voir combien il y en a un client qui va se faire. Moi, je suis génial pour eux, les officiers toujours. C'est 40 ans que j'ai la ils me connaissent. Oui. Mais bon, à la base, le client vient pour le physique. Et vient, il trouve sa femme. Puisqu'il ne va pas chez nous, il va aller loin. Il voit une nouvelle, il va chez une nouvelle. Un client, c'est comme ça. Il faut être réaliste, il faut. Ils ne sont pas fidèles à leur femme. Qu'est-ce qu'ils vont être fidèles à vous? Moi, j'ai plus. I would like to request Mr. Jasmeet Singh, the director of the film The Separate Sky, and Mr. Guy Gordon, the director of the film The Being from Elsewhere, to come onto the stage. Hello everyone. If you already have any questions, feel free to ask. Any questions, guys? Regarding the documentary, Separate Sky? Thank you. I think you put more visuals in this. It's very right. I'm sorry? I think you put more visuals in it. Because I wanted to show the reality of this problem of purification. You know that 60% of Indians and 70% of women don't have access to toilet. That is the reason. It's an alarming issue. It should be addressed. And there will be a dramatic fall in rape cases against women. Any questions? Mr. Jasmeet Singh is the director of the documentary Separate Sky. So have you shown this movie to some ministries? Not yet. But that was great at the time. Not yet. So that was great. Sir. Thank you very much. Guys, I strongly believe if this issue will be addressed, then there will be a dramatic fall against the activists. And women's security and dignity, which has now become an alarming issue and social concern for us. Thank you very much. There are some more international films that will be screened tomorrow, so be there to relish the cinema, the best of the cinema actually. So moving on to our next category of the films, that is short films. Fueled by artistic expressions and limited only by the running time, short films transcend traditional storytelling. They are significant and popular way by which an artist can connect with his audience.
So the first film in this category for the day is Marriage a License by Mr. Kunal Aneja. This film is made in response to the Delhi High Court statement which snubbed the idea of marital rape. Here we present Marriage a License. अरे तलाक के बाद तेरे बच्चों को कौन पालेगा? अरे ये तो पति का हक होता है, क्यों मना करता है? शादी क्यों जरूरी है मेरी? Our next short film is Dharmam by Madone M. Ashwin, an unhappy kid on his way to a fancy dress competition and a newly appointed traffic constable revive their righteousness after an encounter with a weapon. So Dharmam, next shot. Okay. So let's. I am a beggar. I live in the streets. I beg for money. I beg because
சொல்லுடா. I beg because Teacher sir, I did my English this no. ஏய் இதுதான் வித்தியாசமா இருக்கும். கண்டிப்பா பிரைஸ் வின் பண்ணிடலாம். அம்மா சொல்ற மாதிரி சொல்லு. சொல்லுமா. I beg because I'm poor. I beg because I am poor. அப்பா என்ன பண்றாங்க? ஸ்கூல் டீச்சர் சார். ஓ வாத்தியாரா? அப்புறம் படிக்கிற வேலைக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே ஆசை சார். ஓ ஆசை. தெரியும் தம்பி, நீங்க எல்லாம் எதுக்காக இந்த வேலைக்கு வரீங்கன்னு தெரியும். இல்லை சார், நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இல்லை சார். போயா போய் வாங்கிட்டு வா. என்ன சார்? ரோட்டோரத்தில் பூக்கடை போட்டிருக்காங்கல்ல, இன்ஸ்பெக்டர் சொன்னாரு, போய் வாங்கிட்டு வா. கூட்டமா இருக்கா? ஏயா ஒண்ணு பண்ணுவோமா? ஓரமா உட்காந்து கூட்டமா போன பண்ணி வாங்கிக்குவோமா? தப்பு சார். மெரிட்டா மெரிட்டான்னு கேட்டேன். ஆமா சார். நீ வந்துட்ட, நாங்க 10,000 வசூல் பண்ணோம்னா இன்னும் 10 வருஷம் ஆகும். இங்கதான் சார் வீடு சார். ப்ளீஸ் சார், வீடு இங்கதான் சார். வேஷம் எங்க ஸ்கூல்ல ஃபேன்சி ட்ரெஸ் காம்படிஷன். இப்படிலாம் ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போய் ஸ்டேஜ்ல பேசணும். நீ என்ன பேச போற? I am a beggar. I am in the streets. I beg for money. I beg because I'm poor. காலடியா போகிறேன், கண்டகிட்ட கேட்கிறேன், உனக்கு தீர்க்க வயசில்ல, உசுர வாய்க்க மனசில்ல, என்ன மட்டும் மறந்துட்டியே இச்சக்காரே. கேட்காம இருக்கக்கூடாது. தப்பு. அடிக்கடி பண்ணிருக்கேன். என்ன சார் பிரச்சனை? சார் சின்ன பையன் பணத்தோட பாக்குறேன் சார். அதுக்காக அடிக்கிறதா? எதா இருந்தாலும் பேசிட்டு இருக்கீங்களா? பேசிட்டு நேரம் இல்ல, எதா இருந்தாலும் சொல்லி பாத்துங்க. நான் கிளம்புறேன். ஹலோ, என்ன நீங்க மட்டும் போறீங்க? அவசரமா போடும் சார், நீங்க பாத்துங்க. சரி சரி, நான் பார்த்துட்டு போயிட்டோம். என்ன சொன்னேன்? வாய கிழிச்சு யோ வாயா தூக்கி எடுக்கிறதுலே வந்து சேரும். சார் சார் டேய், நீ இன்னும் போகல? டாக்குமெண்ட் கொடுத்துருக்கியா? டாக்குமெண்ட் இல்லை சார். எவ்வளவு வச்சிருக்கேன்? 100 ரூபா தேங்க்ஸ் சார். சார் சார் எஸ்ஐ கொடுக்க சொன்னார் சார்.
Next on stage is Arjun. கால்நடையா போகிறேன் கண்ணுங்கிட்ட கேட்கிறேன் முளைச்சி திங்க வயசுல உசுர மயக்க மனசுல என்ன மட்டும் மறந்துட்டியே பிச்சைக்கார கடவுளே. The next film in the short film category is Albele by Miss Ashpreet Kaur BG. Albele is a film on Katputli colony in Shadipur, which is inhabited by various artists who continue to preserve their traditional art forms despite infrastructural inadequacies and lack of recognition. The film focuses on the wonderful art forms of these street performers, plunges into the dark side of their lives, and comes out triumphant with accounts of their achievements at various platforms. Enjoy the film, ladies and gentlemen. शायद करती गोद में मेरे मारा तलावत का अरे मारा तलावत का दिलाने बोए हादी डाली अरे बार के बातियो दमन ना बोल पकड़ा मेरा नाम राजकुमार भाग है और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और हमारा पैसा है कठपुतली का शो करने का। गाँव और स्कूलों में हम कठपुतली का शो करते थे। मेरा नाम पूरन भाट है, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और मैं ट्रेडिशनल पब्लिक में हूँ। मेरे दादा परदादा यही काम करते थे, कठपुतली का खेल करते थे और हम भी कठपुतली का खेल करते हैं। इस कठपुतली कॉलोनी में हमें 50 साल हो गए रहते हुए। तो सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मली हम राजस्थान से जब निकलते थे ट्रेवलिंग के लिए तो दिल्ली होते हुए जाते थे। तो दिल्ली में जब ज्यादा अच्छा काम मिलने लगा तो हमने यहाँ रहना शुरू कर दिया। तो जब से यहाँ रहना शुरू किया तो धीरे धीरे हर स्टेट का आर्टिस्ट यहाँ पे जुड़ने लगा। यहाँ पे हर तरह का हर स्टेट का बंदा रहता है, हर डिफरेंट तरह के आर्टिस्ट रहते हैं। पपिकेर है, मैजिशियन है, गजलर है, एक्रोबैट है, डांसर्स है, सिंगर है, पेंटर है, मूर्तिकार है, पत्थर की मूर्तियां बनाने वाले हैं, लोहे का काम करने वाले हैं, शीशे का काम करने वाले हैं। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरह से रहते हैं और अलग अलग स्टेट से आए हैं। यहाँ पे अगर सही मायने में इसे कठपुतली कॉलोनी को अगर नाम दिया गया तो मिनी भारत भी आप कह सकते हैं। मेरा नाम अरुण है और मैंने ये अपनी आंखों से बनाया था।
हमारा गुजराल होता है। हम इस कॉलोनी में काफी सालों से रहते हुए बड़े हो गए और हम हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं। काफी साल से ही पेंटिंग का काम करते हुए हमारे बच्चे भी करते हैं, भाई करते हैं, पिताजी से हमने सीखा हुआ है। बाप का कहना बेटा नहीं मानता, बेटे का कहना बाप नहीं मानता। रस्सी हमारा कहना रस्सी जैसे कहेंगे रस्सी अभी उन्होंने डाल रहा बैठ में भी आपका का डाला आवाज आवाज अच्छी अब तो ये हमारा खानदानी काम शुरू से बाप दादा से चलते आ रहा है। ये बाप दादा से चलते आ रहा है। अब हम लोग उनकी औलाद अभी हम कर रहे हैं। अब हमारे बच्चों ने वो करेंगे, तो ये हमारे खानदान के काम में शुरू से चलता रहेगा। मेरा नाम मजीद है, मैं जानवर में मैनेजर हूँ। पहले जितना काम था उतना काम नहीं है। मैं सोफा ओपन, मोरे ओपन, ताश में ओपन और बर्थडे पार्टियों में और जगह जगह शो करता हूँ। तो हमारा रेगुलर काम नहीं चलता है। जब हम लोग जाते हैं इंडिया से बाहर तो हमारी बड़ी इज्जत होती है। उनको ये पता है शायद ये यहाँ पर आए हैं हमें शो के लिए, तो कहाँ रहते होंगे महलों में। जब हमारे कॉलोनी में आते हैं तो उनको हमारी झुकी झुपड़ी और गंदी दिखती है। बस हम यही बोलना चाहते हैं, हमारी कॉलोनी यही रहे और हम भी सुरक्षित यही रहना चाहते हैं। बस ये हमारे काम में Our next short film is The Beautiful Game by Nishan Singh. The film is about the practice of discrimination and racism in the society, delineated through the game of football. Let's enjoy the film, The Beautiful Game by Mr. Nishan Singh. इसका बाप मेरे घर से कूड़ा बनाता है।
Ladies and gentlemen, the next film to be screened is The Thief by Ms. Shivangi Jain. The Thief is based on Ruskin Bond's short story with the same name. It depicts the relationship between Arun, the writer, and Hari, the thief. This film beautifully tells us how love and kindness can change a thief or a criminal into a responsible and a sensitive person. Enjoy the film, ladies and gentlemen, The Thief. हाँ यार घर तो सेट हो गए पर एक हेल्पर की जरूरत थी। कोई सीन बनता है मैं तुझे बताता हूँ। चलो के भाई बंद मत करो। अरे लोग काम क्या है तुम्हारा? हरी अरे तुम काम क्या करते हो? ऐसे तो कुछ नहीं करता, किसी का कुछ भी काम कर देता हूँ। तो है नहीं ना मेरा। खाना बना लेते हो? हाँ बना लेता हूँ। तो हरी आज से तुम मेरे दो। बस बढ़िया हो गया।
ready? Ready to go? You want to say? Ready to argue with me? So do not make it as a Ladies and gentlemen, you just witnessed the beauty of short films. Now, I would like to call upon the filmmakers of the short films we just screened. Kunal Aneja for Marriage a License. Alright, hi. Also, there's a slight change. I'm not Nalini, I'm Marnie. I'm the one who acted in that movie. Uh, so, as you must have seen, the movie spoke about how marital rape happens and is not even recognized in law. There was a so what sparked the idea of the film was that we were reading the page of Facebook, and we just saw that Delhi court, a statement from Delhi court, which said that marital rape is not rape. So it was something that outraged us completely in that moment, and we were infuriated, and we wanted to speak about it. And what else then to probably let cinema speak for itself? So we also had this idea of how to go about it. How do you want to show it? If this rape is it really physical in nature, or do you have to go through that whole stereotypical and in the popular conscious the image of how a rape happens? So we decided to break away the identity of the rapist, which is to one person. Also, we tried to incorporate the idea of mine into it. Since the identity has to be broken. It was just one person, one side of it. There was a man and there was a woman and they were in the relationship. And how the sense of oppression and subordination came into play slowly. The film also followed a non-linear narrative, as you must have observed. If you see, if you sort of that, it began on a note where it had already happened, it went back in time, and was also coming forth in time. So ultimately, there was just one tear in her eye because all of that had been soaked up. She's been through it for about quite a lot of time, and there's just nothing that you can do about it because you're helpless. Helpless was the word that, because law is supposed to protect us and come to our rescue. But even when the law makes us refuse and state that it is not what it is, then what choice do we have left? So yeah, that's about it. Any questions that anybody has in mind? Any observation? Anything that you, of course. Why did you choose this treatment for your movie? This treatment? Yeah. Can you be a little more specific? As in, why did you choose the non-linear format and the way you shown your movie? Yes. You could have shown like a story, but you chose a very different concept. So why did you choose that?
Alright, okay. I feel that so whenever Kunal and I make movies, our approach is very different. So we let instincts guide us. We never really script, sit, and jot down scene by scene, line by line, dialogue by dialogue. We never really do that. Or lately we've realized that this is something that is necessary, something that you should do. But in that moment, so it was on a Saturday evening. I clearly remember it. And in that moment, we realized that let's just do it tomorrow. So I came to him. I came to his place. I just did the painting. I just painted my face, and I got my mustache into how also I was looking very funny at that moment. Also, it was very hard for me to be able to contain that character in myself. So there was no script. There was nothing. It was just an idea in our heads, and we just tried to talk to each other about it, sat, and brainstormed and thought how we could progress. And as far as the non-linear narrative is concerned, also I feel it was instinctive. We don't really have a logical answer to it because at that moment we saw and we felt that this is something that probably is making sense with the story. Also, when we started editing it, we felt that probably we could add a layer to it and make it non-linear, so that because you have to surprise the audiences. That this is something that we truly fundamentally feel that if the audience can guess what is going to happen next, then you fail somehow. So if you keep them on the edge, if you keep them attentive, you want to make them look and see. So I think that's something that only the narrative has an edge over the usual regular narrative. And this is something that we truly feel. So yes, it was instinctive. We thought we should do it, sat, talked about it, felt, did it. Yeah. Hi. Yeah, I'm not the director of the film. My friend Kunal directed it. I'm just the actor. My name is Karan Kumbani, and I'm here with my friend Bakul. I'm so sorry I couldn't come on time. I don't know. I thought that I was going to see 4:30, so I'm getting very excited that I would like to only see it. But it's a beautiful auditorium. We don't really have that kind of facility in our college. Thank you so much for Okay, the I have a question for you. First of all, congratulations on a beautiful movie. I wanted to know the man and the woman, their faces were painted white. I wanted to know what was the logic behind the white color, what was it symbolic of? Yes, this is something that I have an answer for. Very logically, that so what happens when you? It was also a statement on the very fact that we did something like that. Was also a statement. Was also an insinuation on the whole idea of identity, of how I feel, and we've been conditioned to think as how man and woman are different beings, are different from each other, and as you and me are different, and I am a man and you're a woman in a way, and how that is a social construct. It is not uh, man or woman in fundamental terms, or it may be. I don't know. So in that, so our idea behind that was to do something extraordinary. We felt that we could have done something like that. Also, this is something that I felt probably when the movie was ready. I felt that we could probably do my sort of scene with just half of my face with the mustache, and with the other half with another girl, probably. Because I also felt that when I had put the wig on, somewhere I felt that we were losing the authenticity. But then we realized that our statement would be more effective, and our medium would be more effective and would have a greater impact if it's just one person saying and not saying anything at all. So if there is just one identity, there's just a face you're looking at. So how would that make you feel? And how eyes are supposed to speak? So this is something that we tried. I hope that it came out right. Of course, when we see it, we feel that we could have probably do this and probably done that. But I think we managed a decent. Yeah. Anything else, please? Just lovely discussion. I'm just any more questions.
Alright, so since we're running out of time, I would not like to take much time of yours. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Karan, for sharing your experience. Now, I would like to call upon Medone M. Ashwin for Dharmam, Ashpreet for BG for Albele, Nishant Singh for the beautiful game, and Shivangi Jan for the theme. Come and share your experience. Hi, I'm Nishant Singh from The Beautiful Game. Okay, so I really wrote something sitting right here for this interaction session. Hello, jury, and hello, guys. First of all, I feel glad to be back to Webs as this place will always remain special for me because this is the place where my first movie, The Dark Side, was screened. Secondly, talking about my view from The Beautiful Game, I would just like to say that it's a very simple story about an untouchable guy who dreamt of getting accepted not only in the game of football but also in the game of this world and society. So by this, I just attempt to contribute even 1% to this world by telling people that whoever you are, whatever your problem is, it's not that big that it can stop you from making the world realize your worth. So never lose hope, have some guts, and show the world who you are, what you're like. Thank you. And if anyone has a question, then they may ask it. Yeah. Hello, I enjoyed your program. Yeah, thank you. The question is, what about the copyrights of those songs? Actually, I have been dealing with some copyright issues when I released it on YouTube. Then they sent me a disclaimer saying that your movie has some copyright issues and it can't be viewed on mobile. So it said, yeah, it's okay. I've used it, but I guess I've used it under the legal guidelines because the music is not exceeding 1 minute. But then they didn't do any legal action, and if it happens, then we'll face it or let's remove the songs, whatever. Anyone else? Hello, I really like your movie. One of the messages in the ending, it said be a human, not a racist, right? Yeah. I thought your movie was about casteism, right? It was not about racism. Yeah. That was my question. Okay. Really nice question, but I thought some people are racist on the basis of caste. They can't be. Okay, it's my fault. Accept that. Anyone else? Yes, no. Thank you. Okay, hi, I'm Arshpreet and my film was Albele. Just a little insight as to when we started doing the film, and this is a personal experience. Going to the community there, and I felt that this is one issue that needs to come to light. All of us live in Delhi. All of us know that there's an entire community of Shadipur where there are artists, but not many of us are aware that apart from Shadipur being the slum, it is an area that represents India internationally. These kids that you saw, the clapper boys, I saw a lot of response from the audience when the kids were doing their entire piece. These kids have gone out internationally, they have visited various countries, but when we see such conditions that they're living in, this is what we wanted to bring to light. Apart from that, our main focus of the entire film was the DDA issue. What we wanted to show how these people are still smiling in spite of the kind of difficulties they're going through. They want to live in that space. They still want to live. They tell us when we met them, they told us that आप हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़े से पैसे दीजिए, आप सिर्फ यहाँ की सीवेज लाइन बना दीजिए, जगह को हम दिल्ली हाट से ज़्यादा सुंदर बनाएंगे. तो अगर कुछ इस तरह की चीज़ हमारी दिल्ली में है, if we have that kind of cultural richness in our own city, then why not we as youngsters go and show it to everybody and create some kind of sensitivity amongst the government and the officials as well, so that this issue comes to light. There's a lot of issue going on in that community. Every now and then there are policemen coming and they're beating up people. So that was the whole idea, to show that this is also part of Delhi. This is also part of our culture. Let's come together. Any
observations, any critical comments, I'm more open to that. Anything to the audience. I like what you just told about your movie, but uh, I want to ask you, why didn't you go for a documentary format instead of a short film format for giving your message? Has it? See, the entire film is based, it is a documentary. You can't Yeah, deny that it's a short film, but there are certain constraints in the time and the way we had submitted it here. So that is where the problem comes. It's very small. We didn't want to go overboard with the entire issue, showing a lot of. So we limited ourselves to 5 minutes so that we make an impact. So it doesn't. That is why it's in the short film category here. But essentially, we look at the film. yeah, but if you could have shown something more, it could have been more effective. No? Something more About the issue. See, in the end, the whole idea, our focus was not entirely on detail. Our focus was on these people. The entire, when you see the entire song being played and the information is given and we show smiling faces. So this is what we want to show, that in spite of these troubles, these people still smile, these people still want to represent our country, they still feel proud that they belong to such an artistic community. So this is one kind of work that passes on from generation to generation, and they're very proud of this fact. So that is what our main focus was. Our main focus was not the DDA issue. We're not trying to show what DDA is doing with the community. We're trying to show what these kind of people are, what they do for the country, and what are we giving them. We're actually evacuating them from the place they live. That is what. Any other questions? Film was very good, obviously. In the beginning, I found that it was done by students of IT college, right? Right. So I guess, if not all, at least the majority, I suppose 90% of the crew was all women. The entire group was. So there was not even one male involved. So not being sexist, but I guess we know how our society functions. So what were the challenges going into such a colony and all women crew entering such a colony, working on such a film? There are a lot of challenges when you go to a certain area, but this community is very warm. The people there, they're very warm, they're very welcoming, and the best point is that they have so much exposure that they're open to anything that you're doing. So we didn't face any kind of difficulties in interacting with them. The difficulties were more regarding the terrain that we were working in. There were very small gullies, there were light issues. You guys saw the kind of filth and dirt we were dealing in. The issues were more on those physical parameters instead of actually interacting with them. So that is what we want to also show, that these people are very warm and welcoming. They're a very beautiful set of people. If you go and interact with them, the kids are extremely talented. So if you go and sit with them, anyone of you wants to go there, they'll be more than welcoming to show you what they actually excel in. So it's more about the physical problems instead of meeting the people. As far as the girls group is concerned, the only thing that I feel is when a group of girls goes out with camera, people are quite surprised to see that. So that is something we had to face, but not from them, but from other people around us. Nothing about it. Well, thank you so much. हाय मेरा नाम है शिवांगी जैन और मेरी टीम की फिल्म थी द थीफ और मुझे पता नहीं है मुझे अभी क्या बोलना है। द थीफ हमें फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है तो उसके लिए मैंने डायरेक्ट करी थी। बाकी वैसे रस्किन बॉन्ड की एक शॉर्ट स्टोरी है द थीफ नाम की, उसके ऊपर ये बेस्ड है। और उसके अंदर बहुत सारे वो एक अडेप्टेशन है, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस किए गए हैं क्योंकि जो ओरिजिनली जो स्टोरी थी वो बहुत ही पुरानी थी, 1930s 40s की थी। तो मैं अपनी टीम को बहुत ज़्यादा थैंक करना चाहूँगी जिसमें थे संजीत सिंह, पारितोष, रितेश और अखिलेश और मुझे नहीं लगता मेरी टीम के बिना मैं इतनी अच्छी तरीके से इस मूवी को एग्जीक्यूट कर पाती। एंड दैट्स अबाउट इट। किसी को कुछ पूछना?
Yes, please. Family. Hi. Hi. My name is Kavli. I know. Since I really like your work, can I work with you for your next? Actually, क्वालिफिकेशन एक प्रोसीजर होता है तो आपको बहुत सारे मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ प्रोसीजर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा थैंक यू Thank you, filmmakers, for your beautiful creations and sharing your experiences. Now we'll be moving on to your next category, that are advertising films. Advertising films leave a deep and long-lasting effect on the viewers. Ad films are supposed to be highly creative and catchy so that the audiences stay glued to the ad and the objective of ads is served. Let us move on to our next film, which is The Dragon Art Jewelry by Samedika Dutt. Dragon Art Jewelry presents works with Kundan inlaid with stone on gold and Meenakari etched with different colors on gold. A vast range of earrings, necklaces, bracelets and rings. Designed to adorn the woman and enhance her beauty. Completing a glamorous look with elegance and grace. Serving as a certificate of authenticity, we introduce to you the art of fusion. Exclusively for women, capturing the nature of femininity with sensuality. A luxury collection with a limited edition. Grab it because you're worth it. Available at E3 Defense Colony, New Delhi, 110024, or contact us on joeydat@gmail.com. The next ad film focuses on a person who is running late to reach Delhi after attending an official meeting. He's in hurry to reach somewhere. Why is he so eager? What is that he wants? What is that should not be missed? Let's find out. Should not be missed, ladies and gentlemen, by Mr. Nadeem. अरे क्या हुआ? लगता है सर गाड़ी खराब हो गया। छोड़ो।
Ladies and gentlemen, our next film is Anti-Smoking by Syed Abdullah Zaidi. The next film, ladies and gentlemen, is Para Smoking by Deepak Jain. Our next film is Honda Jazz Fantasy by Mr. Rajat Kakkar. In this film, a man imagines himself in a sports car while driving in all-new Honda Jazz. Hello, sir. I will take the measure. अरे वाह, इतनी जल्दी? सर, That's right. Next ad film is Fevicol. This ad film shows three grown-up people sitting together after a long span of time and discussing how things would have been different if they had not been separated. क्या कर रहा है यार कुछ नहीं दोस्तों मैं तो बस ये सोच रहा था ये मंजर अभी ऐसा होता और हमारे दोस्ती और रिश्ते बन was also by Mr. Rajat Kakkar. The next film is
is by Mr. C.V. Raman and the film title is Reflections. It's an art film. Wow, गरम-गरम पकोड़े। हाँ, तो लगे रहेंगी, बच्चे बड़े हो गए हैं। जिस संस्कृति की एक सुनने में उनको अपनी सभ्यता और संस्कृति संस्कृति की एक सुनने में उनको अपनी सभ्यता और संस्कृति सिखाना। पर कैसे करना? बस। हाँ, संस्कृति की एक सुनने में उनको अपनी सभ्यता और संस्कृति सिखाना। घर का काम, बच्चों की देखभाल, ये सब करके करके साथ जॉब करना बहुत मुश्किल हो जाता है। I think this is the right time to choose your job. It's my dream to pursue this career. अरे यार, फिर से ये सब स्टार्ट करना। बच्चों के साथ साथ घर का काम करना, अपनी नौकरी करना, ये सब करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वैसे भी जॉब करके क्या रेस्ट तो मीडिया बनना है। मैं वो नाम सब संभालूं। तो यार, अगला तैयार हो गया। अभी आया। Now we would like to call upon the filmmakers of all the art films. Samedika Dutt for Dragon Art Jewelry, Nabil Rizvi for Should Not Be Missed, Saeed Abdullah Zaini for Anti-Smoking, Deepak Jain for Passive Smoking, Rajat Kakkar, Honda Jazz Fantasy and Fevicol by Rajat Kakkar. People will be taking only two questions per movie due to time constraint, so kindly cooperate. Seems that they are not here. आदाब अर्ज़ है। किसी का कुछ सवाल नहीं? चलो मैं बता देता हूँ टीम के बारे में and I would like to thank them. Harshit Chadda was with me in editing and on cameras there was Viplav Vishal, Ranjit Kumar and Harshit Chadda and eventually वो उसमें क्रेडिट्स में सिनेमेटोग्राफर में आशीष बजाज भी हैं क्योंकि उनकी एक रैंडम फुटेज उसमें यूज हो गई थी और कौन था हाँ स्टारिंग नन अदर देन बाबा अभिरूप एंड बस बाकी फीचर्स में मुझे बाद में कुछ शॉर्ट एडिट करने में अमित सन्ना सर ने कुछ काफी इंपॉर्टेंट फीडबैक्स दिए थे जो कि बहुत काम आए। दैट्स इट। Thank you, Nabil, for sharing your experience. Our next film is Manglik, A Blessing by Mr. Ravikant Singh. Some people are termed as Manglik because of some planetary positions during their birth. It is often said that a Manglik brings bad influence to their partner and people around them. The fact that this belief still exists across all the societies cannot be undermined. Manglik, A Blessing is a story of one such cursed woman who by chance meets a stranger. Let's enjoy the film A Manglik by Mr. Ravikant Singh.
पानी लेकर आती हूँ। पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी। शहर से गहने खरीद के बहन की शादी के लिए गाँव के पेड़ के लिए मिठाई रखी। 10-12 लोग पूरे जमीन में भागते भागते हमारे साथ कूद सके क्या कि कुत्ते 7-8 डरने शुरू हो गए और उसमें उसमें हम आम लोगों की जान सस्ते में बिकने लगी। निकला था अपनी बहन की शादी करवाने के लिए और यहाँ छुपा गया। आप नहीं रुक सकते हो जब तक की झड़प शाम नहीं हो जाती। आपके पति कितना समय ये बेटा कोई बात नहीं पर ऐसा खत्म होते ही जाएगा। आप दुआ कीजिए कि आप जल्दी साथ हो जाए। ऐसा मैं करता हूँ। क्या लगता है सब शांत हो गए। मुझे निकलना चाहिए। अभी अभी थोड़ी देर में सॉन्ग तो आप भी आओगे। नहीं मैं चलता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फरिश्तों की कहानियाँ सुनी तो थी बचपन में मगर आज आपसे नहीं हुई। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। तो ऊपर वाला जो बादशाह है ना कभी कभी इंसानों के रूप में धरती पर आता है और मेरे लिए वो आपके रूप में है। मेरी बहन की शादी अगर आप आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। जिस फरिश्ते ने हमारी जिंदगी संवारी है उसकी शादी पे आने की हमारी आगे की जिंदगी भी खुशहाल हो जाएगी। मैंने अपना पता टेलीफोन के पास एक चिट्ठी पे लिख दिया है। प्लीज आइएगा। हमारे यहाँ गर्मी छिड़ चुके हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। परेशानी की कोई बात नहीं है। बस ये सब खत्म होते ही रहा है। आप बस दुआ कीजिए कि यार ये आप जल्दी शांत हो जाए। अच्छा मैं रखता हूँ। शाम तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए? क्या हुआ सारे ख्वाबों का जो हमने साथ में सजाए थे? मैं ही गुनहगार हूं तुम्हारी मौत का। मेरे ही कहने पे तुम गुनहगार अपना काम बढ़ाने जा रहे थे और मेरी बेवसाई की वजह से दुनिया में तुम्हारी जान चली गई। माने इस बोझ के साथ मैं और नहीं जी सकती। बस आखिरी बार तुम्हारे नाम पर श्रृंगार करूंगी और तुम्हारे पास आ जाऊंगी हमेशा के लिए। मैं नहीं जानता मगर होना क्या होता है। क्या दंगों में मारे गए सभी लोग इसलिए मारे गए क्योंकि उनके आसपास के लोग मानते हैं?
शायद परवरदिगार के चुनिंदा लोग ही मामले होते हैं, और मेरी खुशनसीबी ये है कि इनमें से एक मेरी जिंदगी में है और मुझे और मेरे परिवार को मेरी जिंदगी में है। आपने मुझे बचाया बिना सोचे समझे, यहाँ तक कि मेरा नाम भी नहीं पूछा। आप किसी के लिए बुरा सहाय कैसे हो सकती है? आपकी जिंदगी बहुत कीमती है क्योंकि आप दूसरों की जिंदगी में मंगल लाते हैं। इसे ऐसे ही कुर्बान मत कीजिए। The next short film is an attempt by the director to make people imagine a world without money and replacing money with our talent to buy the things we need. The next film, ladies and gentlemen, is Talent Barter by Saeed Abdul Zaini. ये दुनिया अहले दुनिया को सजी मालूम होती है, नजर वालों को ये उजड़ी हुई मालूम होती है। ये किसने कर दिया है दोस्तों से हमको बेगार, हमें अब दोस्ती भी दुश्मनी मालूम होती है। कभी कभी सीखने के लिए अगर हिम्मत करे फिर क्या रहे इंसान की बसी। यह है कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है, यह है कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है।
Our next film is Adi Roti by Zulfi and Group, a short film where two students spend their entire day on an amount of rupees 20. What was their experience? Let's find out in Adi Roti by Zulfi and Group. वो स्टूडेंट्स हैं और आज हम अपना पूरा दिन इन 20 रुपयों पे गुजारेंगे और एक रिक्शे वाले काम रिक्शे वाले की रोजमर्रा की जद्दोजहद का तजुर्बा करने की कोशिश करेंगे। पराठा और अचार और उसमें से भी हम लोगों ने एक ही अचार अफोर्ड करता है और 2 पराठे जिसमें हम लोगों ने सेव करेंगे कि हम स्पेशली रात को महबूब रख सकते हैं।
There is an announcement, ladies and gentlemen. We are screening some beautiful films today, but we have more in store for you, which will be screened tomorrow. Which includes some international film entries. If you want to experience the best of cinema, then kindly attend tomorrow's session, which will take place from 10 a.m. to 4:15 p.m. After which the valedictory function will also take place. The next film is Ra by Mr. Sahil Behl. This film revolves around increasing number of rape cases. It showcases the conflict between people, those are concerned about the ruthless behavior, and those ignorant minds who are there in the society. Ladies and gentlemen, enjoy. हाय दिस इज आरजे स्वाति और दिल्ली रिलीज केस में कोई नतीजा सामने अब तक नहीं आया है। प्रोटेस्टर्स गुस्से के मारे पहुंच चुके हैं इंडिया गेट और उनका ये कहना है कि वो वहां डटे रहेंगे जब तक अभी इंसाफ नहीं मिलेगा। आपका क्या कहना है? जी देखिए आपका मिसेस सेक्स तुम्हारा काम तो होता ही सर। क्या मैं आंदोलन जरूरत नहीं चाहती चल रहा है मेरे साथ। कभी कभी अपने बारे में ना सोचना दूसरों के लिए सोचना चाहिए। युवक पीढ़ी का कहना है कि कुछ लोग ऑपोजिशन पार्टी के हैं। उनके आने से शादी भाई तुम्हारे कैरेक्टर्स को काफी पसंद है लोग। सो वरना आगे भी ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल ये देखिए मैं इस पे काम करना शुरू कर दूंगा। कंप्लीट मुझे टाइम पे चाहिए। श्योर सर मैं वो हाँ तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट से भी पेमेंट ले लेना मैं बोल दे रहा। थैंक यू सर। जिस देश के लोगों ने अपनी आवाज उठाकर आजादी तक जीत ली थी, आज उसी देश में आवाज उठाने वालों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। तुम जाओ कार्टून्स बनाओ लोगों को हंसाओ ये क्या देखने लगते हैं वो। और अगर नहीं तो क्या हमारे समाज को ही ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कदम उठाना पड़ेगा। भैया कल क्या नहीं आइए आप कुछ बोलोगे? मॉम अकेले जाने से मना कर रही है। ठीक है थैंक्स। सर बोलो। तुम मुझे देखी आज? हाँ देखी थी पर आज तक कौन सी जगह सेफ है?
लड़के ऐसी हैं जिन्हें घर से अकेले जाना होता है। आई विश हम उनके लिए कुछ कर सकते। मदरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस्मत से किस्मत जान असमंजस में भोला भोला। अलग अलग पथ बतलाते सब, मैं पर ये बतलाता, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशा। हाथों में आने से पहले नाज दिखाएगी आना, अधरों पर आने से पहले अदा दिखाएगा प्याला। बहुत देरी इनकार करेगा साकी आने से पहले, पथिक न घबरा जाए पहले मान करेगी मदशा। पर अब कोई ऐसा है जिससे शायद कोई नहीं रोक पाएगा। जी हाँ, दिल्ली में आ चुका है एक ऐसा आर्टिस्ट जो स्ट्रीट आर्ट के जरिए प्रोटेस्ट कर रहा है विमेन एम्पावरमेंट के लिए। जिन प्रोटेस्टर्स को पुलिस ने रोक दिया था वो अब फिर इन जगहों पर नजर आए हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? चलता है चलने वाला। Our next film is Clock Anti-Clock by Deepak Sharma. Our lives, knowingly or unknowingly, sometimes get stuck in some time frame because of some object, incident, or desire. We cannot come out of that loop without identifying the reason. The same happens with the protagonist of this film. Ladies and gentlemen, Clock Anti-Clock by Deepak Sharma.
I would like to request these directors to come onto the stage, please. Ravikant Singh for Manglik a Blessing, Saeed Abdullah Zaini for Talent Barter, Zulfi and Group for Adi Roti, Salil Behel for Rah, and Deepak Sharma for Clockwise and Anti-Clockwise. Hello guys, hi, I'm Ravi Kant. I'm the maker of Bangla, the short film that you just witnessed. So before I start, and if that is only if you have any questions, I would like to tell something about Mangle. So Mangle was the first film of everyone in the crew, including me, and the film was shot in like less than 48 hours, and it's a zero budget film that we have made. So, any questions if you have? Any questions? I think this is Manglik. The concept of Manglik is something that we keep hearing in our daily lives about Mangal Dosh, even celebrities like they believe in Mangal Dosh as it is said. And so this concept was there in my mind for quite some time. Like we generally see people who are afraid to be getting married to a Manglik person. So I wanted to show something wherein a human relationship is way beyond like Mangal Dosh or any curse or any kabuling. That is how the concept came. नहीं इसमें कुछ भी एक्सपेंडिचर नहीं था एक्चुअली the movie was shot in a friend's room. That is why you see the entire film was shot within one room. So like we did not have the money to spend on locations or travel expenses. So so the actors and everyone, so they are my friends and they agreed to work for free. And since the movie was completed in less than 48 hours, and the only expenses was like the maid coming and cooking. So that is not it. Even the camera was like was given to us by a friend. So that's all. Any more questions? Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Deepak, and you recently watched Clock Anti-Clock. Thank you. I have Rohit also. So again, it was a zero budget film, but it took us 1 year to make this. So do let us know. On this 8-minute film, we spent around a year and a half, and after that we completed. So really happy. It was an action, but what was the concept behind it? What was the logic? Thank you. Well, if you know the physics, if you know the principles of, I would say, forward time travel and backward time travel, right? So there are two principles. So most of the films that we see in Hollywood, we always experience a backward time travel, and a person comes to the past life and then moves forward. I would not tell the exact concept, but because of some reason, a person goes into a loop, right? And if you see that film very closely, then you will understand. It's very complicated. That a person goes into a loop, and at one point of time, when backward time travel and forward time travel comes and meet, then you see the end where the person is opening the gate and closing and sitting inside the room as well. So it's a
point where a person becomes two person because of the time travel, backward time travel and forward time. Yeah. Any? मूवी बनाने में 1 साल तो लगा आपको 1 साल तो लग गया आपको ये बनाने में आपको ये मूवी बनाने में 1 साल तो लग गया 1 साल Because we did not have any animation for this. This is all rehearsed piece. First thing. Second thing, a lot of sound was required. So we made a lot of sound work to make this. If you see the background score also has some kind of sounds. So we actually composed that background. It's not like we just created from some music instruments. No, we actually developed some sound so that it creates some kind of illusion in ears. When you see it, it's a silent movie. Yeah, the movie was really good. Very inspired by the movie Primer somehow. Primer. Very inspired by the movie Hollywood movie Primer. No, absolutely not. I have not watched it. I'm sorry. Yeah. The next film is Nirbhav Nirvair, which means without any fear, without any hatred, by Kunal Aneja. This story is about a young Sikh guy in Delhi who's forced to face the burn of 1984 riots, and then he makes a tough choice. And what's that tough choice? Let's find out. आकाशवाणी सुन रहे हैं दिल्ली में मामला बिगड़ता हुआ नांगलोर इलाके में 6 सरदारों को दिन दहाड़े जलाया गया। सुल्तानपुरी वजीराबाद और मंगोलपुरी इलाकों में भी कई ऐसी वारदातें देखी गई। दिल्ली सरकार ने पूरे शहर में कर्फ्यू लागू किया। अब तक मरे हुए सिखों की संख्या 2800 पार और कई लाखों में। इस सबके बीच बचने का चुनेगा ये ही हासिल है मेरे दोस्त किशन ने
मैं उस जोक को अपनी मुट्ठी में बचा लेना चाहता हूँ। Our next film is Suicide by Deepak Jain. Suicide is a manipulative fantasy of human nature. Let's see the film. अच्छा बेटा ब्रेकफास्ट करिए और तू क्या कह रहा था स्पेशल नहीं है हाँ लेकिन लेट को ऑफिस ओके ब्रेकफास्ट करिए ना बाय
कोई बात नहीं यार, हम पे आगे से कोई कुछ नहीं किया, कुछ आगे Ladies and gentlemen, let's move on to our last film of the day, Office, by Mr. Nishant Mehta. Arjun, an aspiring filmmaker, visits the office of a big producer, Kabir. Kabir asks him to deliver a horror script in a night's time. Arjun accepts the challenge and decides to stay at the office only, unaware of the fact that the office is haunted by a ghost of a woman. What happens next? Let's find out.
May I come in, sir? Yes, sir. वैसे कितना तुमने स्कूल पर खर्च किया है उसमें जो यहाँ पर लोग मुश्किल है यहाँ इंडस्ट्री में इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं तो तुम वैसा भी काम करने की जरूरत आपने इतने अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स को ब्रेक दिया सर। टैलेंट की वजह तो सर आप ही जानते हैं। अच्छे लगता है मतलब मुझे एक बढ़िया औरत फिल्म से पूछते कल तक हाँ मेरे को टेस्ट है हम तो मुझे पास हो गए ना तो मैं तुम्हारे से करेंगे आई विल ट्राई सर। शुरू हो जाए हमारे जीवन है क्योंकि व्हाट क्या होगी टाइम वेस्ट होगा मस्त बैठ के स्क्रिप्ट लिखा काम करना बॉलीवुड में उससे लगा क्या राइटिंग के तैयार जाओ अरे बात करो बोलो क्यों ऑफिस में यही तो मेरी स्टोरी है मुझे ऑफिस में भूत है। ठीक है
Let's talk. Come here. I said come here. This is not the right place. You don't mind. It's only not the right place. तो वहाँ चले जाओ ना तुम वहाँ चले मैं सोसाइटी इसमें तुम्हें दोनों रहेगी कोई तरीका है जिससे तुम वापस जा सको I really want to help you.
Now, I would like to call upon the filmmakers of last three films we have just screened. Kunal Aneja for Nirbhaut Nirvair, Deepak Jain for Suicide, and Nishan Mehta for Office. Seems we don't have anyone. So, that's all for the day, ladies and gentlemen. Hope you have enjoyed. Okay. Hi again. We'll just take 2-3 minutes, nothing more than that. Please, Kunal. Hi, I'm Kunal. Um, I won't really like to comment on the film I made, so I want to listen from you guys. What have you interpreted? Any peculiarities you have noticed? So please go ahead. The film was The Nirbound Nirvair, the film based on 1994 riots. So एक बार लास्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो मतलब लास्ट में बोल कहते हो कि मतलब शर्ट पे ब्लड कैसे लगा होगा the concept was कि जब वो जाता है अपने दोस्त किशन के घर, Kishan was himself drawn into riots. So when Kishan encounters his friend at his own home, he is into a dilemma where he has to choose over his religious identity or a friend of his. Thank you so much. Thank you, Kunal, for sharing your experience. So this is all for the day, ladies and gentlemen. Hope you have enjoyed the film screening today. The Hamlet of Cinephile will continue tomorrow from 10 a.m. We will be screening some magnificent films which will have some international entries as well. After which, from 4:15 p.m., we will be having a valediction ceremony. So thank you all, the Cinephiles.